क्या बोला था? आप लोग भी एडिट हो रहे हैं, आप लोग भी एडिट हो रहे हैं? छूट रहे हैं इससे क्या? आचार्य नरेंद्र देव महाविद्यालय शाहपुर पटोरी समस्तीपुर. First of all, the guest is among us. We would like to welcome our guest by clapping and giving a big round of applause. The topic of today's seminar is the significance of G20 summit under the presidency of India is concerned with Indian economic culturalism. भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की सार्थकता भारतीय आर्थिक संस्कृतिवाद के विशेष परिप्रेक्ष्य में. थोड़ा विलंब हो रहा है कार्यक्रम में, तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा. Today's, especially, we have dignitaries and delegates, especially experts. We have two panelist experts today, Professor B.K. Bajpai, and you see just right side my. He is former director, Giri Institute of Development Studies, Lucknow, and the second panelist is Tharindo Odayanga Kamburawala from Sri Lankan University. So I welcome all the guests, all the dignitaries, all the people on the dais. First of all, in our culture, just in the morning, we say, Karagre vasate Lakshmi, Karmadhe Saraswati, करमूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम. माँ से भी अगर हम देखें तो हम सबसे पहले लक्ष्मी को याद करते हैं. इकोनॉमिक्स के हमारी सारे जीवन की चक्रीय क्रियाएं रुक जाती हैं, तो ऐसे ही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हमारी इसी लक्ष्मी को मेंटेन करने में, इसी की ओर हमें
तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए इसी क्रम में हम सबसे पहले माता सरस्वती को याद करते हैं, क्योंकि वही हमें दिशा बोध देती है कि हमें लक्ष्मी के पीछे लगना है या फिर हमें मोक्ष के पीछे लगना है, या हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं। तो मैं डायस पर उपस्थित आज की अध्यक्षता कर रहे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लिश डॉक्टर एस.बी. कुमार सर, डॉक्टर प्रोफेसर वाजपेयी सर, राहुल सर और संदीप सर, I would like to request you please light the lamp and remember the goddess Saraswati. Please, sir. मैडम मंजरी नाथ जी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं इस कार्यक्रम की, तो रिक्वेस्ट है मैडम विनीता भारद्वाज जी से भी कि लाइटिंग ऑफ लैंप में सहायता करें। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति नमोस्तुते, शत्रु बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमोस्तुते। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। सरस्वती वंदना के लिए मैं अपने बीएड की छात्राओं को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मां सरस्वती के चरणों में अपनी एक छोटी सी वंदना प्रस्तुत करें। मैडम थोड़ी देर के लिए आप ये हट जाइए, अच्छा इधर आ जाइए, स्पेस नहीं ले रखा है, चेयर हटा, हां हटा दीजिए, इधर आ जाइए, लाइट से बाहर आ जाइए, लाइट से बाहर आ जाइए, लाइट कैमरा के सामने सर।
Thank you for Saraswati Vandana presentation sung by B.Ed students. In order to honor our guest, I welcome again the B.Ed students for welcome song. Students from B.Ed second year. अतिथि देवो भव, ऐसी अपनी संस्कृति हम उनको भी ईश्वर का ही एक रूप मान करके उनकी पूजा उनकी वंदना करते हैं। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। A beautiful welcome song by beautiful students for our smart guests. क्लैपिंग थोड़ा ठीक से नहीं लगी, जोर से क्लैपिंग होनी चाहिए, बच्चों को हिम्मत देनी चाहिए। धन्यवाद। केवल इतना ही नहीं, अपने अतिथियों का स्वागत थोड़ा सा इससे भी और अधिक बढ़कर के हम भारतीय परंपरा में करते हैं। इसी श्रेणी में हमारे मध्य हमारे सबसे वरिष्ठ साथी हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश डॉक्टर शशि भूषण कुमार सर से मैं आग्रह करता हूं कि आज के जो हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट स्पीकर हैं प्रोफेसर B.K. वाजपेयी सर का आप स्वागत करेंगे महाविद्यालय की ओर से।
माला, चादर, पाग, साथ में ट्रॉफी भी। स्वागत में कितना भी हो जाए कम है, लेकिन फिर भी भावनाएं बड़े सौभाग्य से मिलते हैं ऐसे विद्वजन। इसी क्रम में मैं डॉक्टर राहुल कुमार सर, ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं सर से आग्रह करता हूं, राहुल कुमार सर से, कि आप हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर शशि भूषण कुमार सर का भी स्वागत करेंगे। आप मतलब हमारे कॉलेज के टीचर हैं तो कम क्लैपिंग रहेगी। ये तो बड़ी कंजूसी की बात आ जाती है ना। और विशेषतः आज सर की ही अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित है। डॉक्टर जीएस दीनबंधु सर से आग्रह करता हूं, आप डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी से हैं, कि हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, Manager, Right Mutual Fund, Mr. Shyams, please come on stage. डॉक्टर गंगा सागर दीनबंधु सर से आग्रह है कि हमारे स्पॉन्सर राइट म्यूचुअल फंड के मैनेजर सर का आप स्वागत करेंगे। आप हैं श्रीमान श्रेयांश सिन्हा जी, राइट म्यूचुअल फंड के आप मैनेजर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाविद्यालय और अर्थशास्त्र विभाग आपके सहयोग की भूरी भूरी प्रशंसा करता है, आपकी सराहना करता है। आपका ऐसे ही हमें सानिध्य और सहयोग प्राप्त होता रहे। डॉक्टर मंजरीनाथ, प्रोफेसर मंजरीनाथ जी, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ऑफ टुडेज प्रोग्राम, शी इज ऑनरिंग श्रेयांश सर। अभी ये अपने अतिथियों का स्वागत, अपने मध्य अध्यक्षता करने वाले सभी मंचासीन महानुभावों का स्वागत। इसके बाद में कार्यक्रम की हम विधिवत शुरुआत करते हैं। कोई भी कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य बिना बताए कार्यक्रम में मन नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है। तो मैं थीम इंट्रोडक्शन के लिए, कौन सी थीम जो आज हमारा आप सामने फ्लैक्स पर देख रहे हैं, टॉपिक है द सिग्निफिकेंस ऑफ G20 समिट अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमिक कल्चरलिज्म। फॉर थीम इंट्रोडक्शन आई वुड लाइक टू वेलकम मैडम प्रोफेसर मंजरीनाथ to please give theme introduction of this program. Thank you, Subhasan sir. Thank you very much.
आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे A&D कॉलेज शाहपुर पटोरी के इस सभागार में मैं अर्थशास्त्र विभाग की ओर से आप सभी जनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच प्रोफेसर वाजपेयी सर उपस्थित हैं। प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर शशिभूषण कुमार स्टेज पर हैं। प्रोफेसर आफ्ताब आलम सर, प्रोफेसर राहुल कुमार सर, प्रोफेसर संदीप जायसवाल सर, हमारे स्पॉन्सर्स और पत्रकारगण, आदरणीय पत्रकारगण, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अर्थशास्त्र की विभाग की तरफ से आज अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। मुझे थीम इंट्रोडक्शन देना है। जैसा कि टॉपिक में हमने सेलेक्ट किया है, सिग्निफिकेंस ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। जैसा कि सभी को पता है कि भारत ने इस वर्ष G20 समिट को प्रेसिडेंसी के रूप में प्रस्तुत किया है। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, देश के हर एक व्यक्ति के लिए बड़े ही गर्व की बात है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए शायद हम में से किसी ने एक वर्ष पहले सोचा भी ना था कि आज सन 2023 में हमें इस तरह से G20 की प्रेसिडेंसी करनी होगी। ठीक एक वर्ष पहले जब हमारा नाम आया तो हमने काफी गर्वित महसूस किया। उसके बाद भी कई तरह की विचारधाराएं आई। भारत के पास संसाधन कम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इलिटरेसी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, कैसे कर पाएगा। लेकिन कहते हुए हम सभी के भीतर की आत्मा जो है वो जागृत हो रही है कि किस तरह से सभी ने देखा कि किस तरह से भारत ने G20 की मेजबानी की, सफल मेजबानी की। और हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये रहा कि किस तरह से हम लोग अपनी संस्कृति को विश्व के सामने प्रस्तुत करते आ रहे हैं, जिस तरह से उस तरह से करते रहे, बल्कि और भी अधिक स्वर्णिम अक्षरों में हमारी संस्कृति का नाम सामने आया। हम इसका जो लोगो आया आप लोग देख रहे होंगे, बैनर पर हमने बनाया है G20 का। उसमें जो कलर्स लिए गए हैं वो कलर्स इंडियन फ्लैग के हैं, भारत का झंडा, जिसे घर का बच्चा बच्चा, इस देश का बच्चा बच्चा पहचानता है, वो कलर्स लिए गए हैं। और एक चीज आप देखिए, उस पे अर्थ बना हुआ है और नीचे में कमल का फूल है। अर्थ है और नीचे में कमल का फूल है। क्या ये, इससे क्या दिख रहा है, क्या ये साबित करने की कोशिश की गई है? हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपराओं में कमल के फूल का विशेष महत्व रहा है। कमल का फूल हमारी जो महादेवी रही हैं, महाउपनिषद की जो साक्षी रही है, महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता रहा है, अर्थव्यवस्था का प्रतीक माना जाता रहा है, अर्थ का प्रतीक माना जाता रहा है। और उस पर विश्व का ये पृथ्वी, पूरी पृथ्वी है। तो ये साबित करता है कि हमने अपनी संस्कृति को साथ में लेकर के हम लोगों ने इस G20 की मेजबानी की। और सिर्फ इकोनॉमिकली ही नहीं, पॉलिटिकली भी हमने किस तरह से इसको लिया। अदरवाइज ये पिछले एक साल से सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, G20 के मीटिंग्स हो रहे हैं, और मुझे लगता है सबको पता ही होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम एक कश्मीर में हुआ और दूसरा अरुणाचल में हुआ। क्या संकेत करना चाह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री? हमारी सरकार क्या सूचना देना चाह रही है विश्व को, क्या बताना चाह रही है? सिर्फ 2 ही ऐसे कंट्री थे, देश थे जिन्हें आना चाहिए था, नहीं आए, चाइना और पाकिस्तान। क्या सूचना दिया गया हमारी तरफ से? ये कि अब
इंडिया, भारत पहले जैसा नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं रहा। हमने अपनी बात को, अपने तत्व को बड़ी मजबूती से पेश किया है विश्व के सामने, बड़ी मजबूती से, बहुत बहुत ज्यादा अपनी ताकत दिखाई है हमने इस G20 समिट के दौरान। और नारा दिया वसुधैव कुटुंबकम का। भारत के तो सभी लोग जानते हैं वसुधैव कुटुंबकम को, लेकिन विश्व में जो भारत के लोग निवास करते हैं शायद वो जान जाए, लेकिन अदर्स आज उन सभी की जबान पर, विश्व के एक एक लोग जो भी जागरूक हैं उनकी जबान पर वसुधैव कुटुंबकम का नाम है। वन नेशन, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसका नारा दिया गया इसके दौरान। तो आज ज्यादा समय मैं नहीं लूंगी, हमारे पास मुख्य वक्ता आ चुके हैं और सर को पहले ही काफी लेट हो चुका है, तो मैं चाहूंगी कि आप सभी बड़ी ही गंभीरता के साथ इस सर की बातों को सुने, और भी हमारे जो गेस्ट हैं, जो भी आए हैं, वो उनकी बातों को आप लोग सुने और अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाने में मुझे लगता है कि बहुत ही ये जो हमारा सेमिनार है, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आज का, वो सफल साबित होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैडम मंजरी नाथ जी। कहते हैं जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं भूल चूक होती है, उसको कौन संभालेगा? जब बुद्धि भटकने लगे, रास्ता ढूंढने लगे और कोई हमें समक्ष ना दिखाई दे, तो एक आदेश की आवश्यकता होती है, एक दिशा निर्देश की आवश्यकता, और वो दिशा निर्देश हमें अपने दीर्घ जनों से मिलता है। तो आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शशि भूषण कुमार सर से मैं आग्रह करता हूं, प्लीज अपने ओपनिंग रिमार्क्स के साथ में हम सब लोगों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। डॉक्टर शशि भूषण कुमार सर। Honorable Vice Chancellor Sahab, Honorable Chief Guest Dr. V.K. Vajpayee, former Director, Institute of Development Studies, Lucknow, Dr. Aftab Alam, HOD Botany, Manager Sahab, Dr. Rahul Paswan, HOD Psychology, Dr. Sandeep Jaiswal, HOD Psychology, and other learned teachers of our college, media persons. I feel myself privileged and highly honored to welcome our chief guest, who is an eminent economist. He is a well-known economist and an expert in management. He had the teaching experience of teaching in several foreign universities. He got an opportunity to visit dozens of foreign universities. He has authored many books on economics and management. So I hope you will listen to him very minutely and you will get enough benefit from his lecture. Today, you know that today's seminar is on G Summit. We did not go into details of G Summit. G Summit is an international forum to discuss global economy, to discuss ways and means to achieve financial stability at international level. At the same time, it also discusses measures to improve environment quality. It's well known to you that G20 has no permanent headquarters. G20 summit is
held annually with rotating presidency. This time, India got an order to host the meeting, and India made a special preparation for the completion of the summit. A special Bharat Mandapam was designed to hold the meeting. The venue was fixed at Pragati Maidan, Bharat Mandapam. And you will notice one thing, that the intention of Prime Minister Modi was to bring to the forefront our Indian culture. The theme of G Summit 2023 was Vasudhaiva Kutumbakam. Vasudhaiva Kutumbakam. The English translation does not connote the same meaning. The English translation is one earth, one family, one future. But it does not contain the same spirit that expresses Vasudhaiva Kutumbakam. Vasudhaiva Kutumbakam has broader concept than this one earth, one family, one future. So I remember one thing. When I was a student of 8 or 9, I used to memorize a Sanskrit sloka from Panchtantra. It was written by Vishnu Dutt Sharma. The sloka is like this: Ayam nijah paro vedi ganana laghuti sam udar karitanam tu vasudhaiva kutumbakam. This is mine. This is his. These are the concepts of mean-minded people. These are the concepts of narrow-minded people. To those who are liberal, who are large-hearted, who are enlightened, the whole universe is like a family. There is emotional bond. So Narendra Modi wanted to convey that the world will have to change its mindset. The world will have to think that the world is like a family. The developed countries should not think that we are superior and developing countries are inferior. So long as this type of thinking prevails, there will be no growth. There will be no peace. If you want to have peace, you will have to maintain with every object of the nature. And one thing more, Vasudhaiva Kutumbakam, there was another term that we think that only human life is not important. All life is equally important. All life. Human life, animal life, plant life, even simple microorganisms. They have their own role to play in this universe. They are not useless. They are not only harmful. They are beneficial as well. If we did reduce the number of any member of the nature, there will be imbalance in ecosystem, and the result of imbalance will be disturbance in environmental pollution, and you will have to face the fury of nature. So one thing is clear, that India wanted to project its culture and tradition through the summit meeting held in New Delhi, and it succeeded in its mission. So, with this, I hope
You will listen to our chief guest and be benefited from his learned lecture. Please, thank you for bearing with me. Once again, I welcome Dr. B.K. Vajpayee. Thank you, sir, for your valuable words. Now, without wasting any moment, just we are proceeding for delivery of lectures. Our today's chief guest is Professor B.K. Vajpayee, sir, and for his brief introduction, Professor Vajpayee has done his postgraduate degrees in economics and management and PhD in economics, along with certificate course in computer applications. He has been director, Giri Institute of Development Studies, Lucknow. He approved PhD supervisor from different state and central universities. 38 students have submitted PhD in economics and management under his supervision, and all PhDs have been awarded. He has been guest faculty member at State Institute of Management and Administration, UP, Lucknow. He visited many countries for taking up research studies as guest faculty member and for paper presentation. Presently, he is working as consultant and member of different research committees. He has a vast experience in research field and publication. More than 45 years of research experience in the field of development research in social sciences. He completed more than 100 social science research projects relating to evaluation studies, social impact assessment, poverty and social monitoring, community participation, and Panchayati Raj system, etc. Such a great scholar, such a great expert, has bundle of knowledge. We feel privileged and honored having such an important guest, and not only guest but the expert also among us. I would like to request Professor Vajpayee to please come and share his experiences, his knowledge and his wisdom with our students and for us also. आज का जो ये कार्यक्रम है, इसके विषय में कहीं न कहीं हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे। कुछ हम पहले से सोचते होंगे, ये G20 है क्या, इसके डायमेंशंस क्या क्या हैं, क्या इसकी कुछ बाउंड्रीज भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, और फिर कहाँ आवश्यकता पड़ी कि अपना भारतवर्ष इसमें एक लीडिंग रोल में सबके समक्ष आए, और एक ऐसा रोल प्ले इंडिया ने किया कि अभी तक जितने भी G20 समिट्स हुए हैं उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भारत के द्वारा आयोजित ये G20 समिट रहा है। तो अभी सर का लेक्चर भी होगा, उसमें भी बहुत सारी बातें आपको सुनकर के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी। तो मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि अपने अपने प्रश्नों को आप लिख करके रखें, और हम सर से आग्रह करेंगे कि अपने लेक्चर के अंत में एक प्रश्न काल अवश्य रखेंगे उस शून्य काल में, ताकि हमारे जिज्ञासुओं को, हमारे श्रोतागणों को अपनी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए भी एक रास्ता मिल सके। कई बातें इस प्रकार की आ जाती हैं। अपनी पटोरी में एक सबसे अच्छी बात मुझे जो देखने को मिली, कभी भी हम कोई सा भी आयोजन करते हैं
छोटे से छोटे आयोजन को ले लें या बड़े से बड़े किसी कार्यक्रम को, हम अपने मीडिया बंधुओं को जब भी बुलाते हैं तो पक्की बात है वो हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, और इतना ही नहीं, बढ़ चढ़ करके उस कार्यक्रम की जितनी भी कवरेज करते हैं, सभी सामाजिक बंधुओं को उसकी सूचना पहुंचाने में आप बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कभी कभी उनके भी अपने ऐसे विचार होते हैं, ऐसी जिज्ञासाएं होती हैं, तो उनसे भी हम आग्रह करेंगे, और स्पेशली हमारे अपने जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट टीचर्स हैं, धुरंधर विद्वान हैं, उनसे भी एक आशा रहेगी कि अपना प्रश्न अवश्य नोट करके रखेंगे, ताकि उनके प्रश्नों से हम सभी का भी मार्गदर्शन हो, हमें भी सीखने को मिले और हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन हो। प्रोफेसर गिरी के विषय में, प्रोफेसर वाजपेयी जी के विषय में हम बात कर रहे थे। सर का एक बहुत बड़ा एक योगदान है कि सर IIPM लखनऊ में एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी आपने एक एक्सपर्ट की भूमिका निभाई है। एमिटी यूनिवर्सिटी, शायद अब तो सभी लोग जानते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एमिटी यूनिवर्सिटी क्वालिटीज को अब नजरअंदाज नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते हम नहीं जानते। सर उसमें भी अपने एक एक्सपर्ट के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान किए हैं। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड गेस्ट स्पीकर भी रहे हैं आप, यूरोपियन इंस्टीट्यूट फॉर एशियन स्टडीज, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। तो सर रेडी हो गए हैं और मुझे संकेत मिला है कि अब अपनी चोंच बंद कीजिएगा और हमें चांस दीजिएगा। तो सर से आग्रह, और बल्कि मैं तो सुनने में ज्यादा भरोसा करता हूं, तो सौभाग्य है कि आज सर को सुनने का हमें एक अवसर मिला है। आइए सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बसंत कुमार, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट BA। आपने हमको अनुपात से अधिक हमारी बड़ाई कर दी। इतना बड़ा हूँ नहीं मैं अभी भी एक विद्यार्थी हूँ, और मेरे ख्याल से जितने भी विद्यार्थी हैं और जिनको शिक्षक कहा जाता, सभी विद्यार्थी हैं, और मेरे ख्याल से यावत जीवन विद्यार्थी रहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में सदैव कुछ न कुछ सीखते रहना पड़ता है और सीखना चाहिए, तभी हमारी प्रगति होगी, हमारा विकास होगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। आवाज नहीं आ रही? हाँ, सर्वप्रथम मैं ये 2 days इंटरनेशनल सेमिनार ऑन significance of G20 coming under the presidency of India, Indian economic culturalism, तो उसमें हमको बुलाया गया, हमें हमारी बातें सुनने के लिए आपने बुलाया, इसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। और के साथ ही मैं सर्वप्रथम डॉक्टर शशि भूषण कुमार जी, जो कार्यवाहक प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कार्यक्रम की कन्वीनर प्रोफेसर मंजरी नाथ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, का आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर विनीता भारद्वाज, और हमारे यहाँ जो हमारी उपस्थिति है उसके सूत्रधार श्री विजय चौधरी जी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर बसंत कुमार का पुनः मैं एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर आफ्ताब आलम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बॉटनी, डॉक्टर पासवान, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस, डॉक्टर संदीप जायसवाल, हेड द डिपार्टमेंट साइकोलॉजी, और इस पूरे प्रोग्राम के स्पॉन्सर
और जो कि राइट म्यूचुअल फंड के मैनेजर श्री श्रेयस जी, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। साथ में सामने बैठे जितने भी शिक्षकगण हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और सर्वोपरि सबसे ज़्यादा जो छात्र हैं, जिनकी वजह से हम लोग सब यहाँ पे खड़े होते हैं, खड़े हो पाने की स्थिति में रहते हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और अपनी बात प्रारंभ करने के पहले मैं एक बात कहूँगा कि इतनी दूर, मैं कल से यहाँ पे पटना में हूँ और इतनी दूर यहाँ पे एक इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन करना और इतने लोगों को इकट्ठा करना, व्यवस्था करना, विजय चौधरी का वहाँ दरभंगा से यहाँ तक आना 90 किलोमीटर, मुझे 72 किलोमीटर से बुलाना, ये सब जो है एक यज्ञ की तरह का कार्य है, यज्ञ है। और इस कार्य के लिए जो इसमें जो इनिशिएशन लिया गया और जिस कार्य को जो बढ़ाने के लिए कार्य किया गया, ये प्रोफेसर मंजरी जी, उनके लिए एक बार करतल ध्वनियां तेजी से हो जाए। और साथ ही में प्रोफेसर शशि भूषण कुमार जी जो है, उन्होंने जो इंट्रोडक्टरी G20 के बारे में अपना भाषण दिया, अपना उद्बोधन दिया, उससे मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। एक अंग्रेजी के प्रोफेसर होते हुए जिनका साहित्य कहा जाता, मेरी पत्नी भी अंग्रेजी की प्रोफेसर है, तो वो हमेशा हमसे कहती है कि आपकी बातें बहुत शुष्क होती है, सूखी होती है, और हम लोग तो लिटरेचर वाले सरस कविता करते हैं, गद्य करते हैं, पद्य करते हैं, लेकिन इस शुष्क विषय में से रस निकालने की जो इनके अंदर क्षमता हमको दिखी है, वो बधाई के पात्र है प्रोफेसर शशि भूषण जी। साथ में मंजरी जी ने जो अपना इंट्रोडक्शन दिया है G20 के बारे में, वो भी बड़ा सार्थक रहा। जितने भी और हमारे वक्ता बोले, उनसे मैं अत्यंत प्रभावित रहा और सब बधाई के पात्र हैं। और सबसे ज्यादा जो बधाई के पात्र हैं प्रोफेसर मंजरी नाथ जी, उन्होंने इतना बड़ा काम किया, मुझको बैठे बैठे कल से आज तक हमने देखा इतना काम कैसे कर लेती, और रोज यहाँ से 72 किलोमीटर से आना जाना अपने में ये इट इज हरकुलियन टास्क, तो इसके लिए फिर वो बधाई के पात्र हैं। इसके बाद अब मैं अपनी मुख्य बात पे आने के पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो विषय है ये G20 समिट के बारे में, तो आपको मैं बता दूं कि इसमें हम जो आपसे बात करेंगे, पूरे G20 तो बहुत बड़ा आयोजन था अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। इसमें हम G20 में, क्योंकि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते, अर्थशास्त्र का टीचर होने के नाते, इसमें कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि से हमारे भारत देश में जो 60% लोग कृषि डाले, तो कृषि से G20 का क्या कनेक्ट रहा, कृषि में किस तरह से G20 की समिति ने प्रभावित किया, क्या क्या प्रोग्रेस हुई, क्या क्या प्रोग्रेस हुई। आपकी बात करिए तो कॉल हम लोग G20 का कृषि अर्थव्यवस्था से क्या संबंध रहा, क्या क्या चीजें उसमें ली गई, और भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या चीजें उसमें ली जानी चाहिए थी, क्या कवरेज होना चाहिए था, और कृषि अर्थव्यवस्था का जो हमारे G20 नेशंस में समतुल्य कौन से देश हैं, हमसे ऊपर कौन से देश है। आपको पता होना चाहिए जिस तरह के अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो इस तरह के समिट होती है, इस तरह के फोरम्स होते हैं, उसमें से उसके मेंबर कुछ कंट्री जो होते हैं हमसे ऊपर के स्तर के होते हैं, हर दृष्टि से डेवलप्ड होते हैं, कुछ हमारे स्तर के होते हैं, कुछ हमसे नीचे के स्तर के होते हैं। तो कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी कार्य होता है, तो उसमें टेंशन ऑफ पावर होता है। बड़े लोग चाहते हैं कि हम अपनी बातें बना ले जाएं, छोटे लोग चाहते हैं हमारी बातें मानी जाए, और फिर अल्टीमेटली किस हद तक बड़े लोग अपनी बातें मनवा ले जाते हैं, किस हद तक मध्य श्रेणी के कंट्रीज अपनी बातों को इम्प्रेस अपॉन करा ले जाने में सक्षम होते हैं, और किस लेवल के
देश जो होते हैं वो एकदम अछूते रह जाते हैं। इन बातों का हम इसमें संक्षेप में इसमें बात करेंगे। उससे पहले हमारी जो कृषि क्षेत्र की समस्याएं हैं हमारे भारत में या भारत जैसे अन्य देशों में, और उन समस्याओं के समाधान के लिए वो क्या समस्याएं हैं। पहली समस्या है फूड सिक्योरिटी, खाद्यान्न की पूर्ति करना। दूसरी, खाद्यान्न की पूर्ति में लगे हुए जो कृषक हैं उनकी आय क्या है। जब तक उनकी आय, उनका न्यूट्रिशन, उनकी 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 गुणवत्ता जब तक नहीं होगी तब तक वो उत्पादन कैसे कर पाएंगे। एक इस पे बात करनी होगी। उसके बाद जो हम लोग कृषि कर रहे हैं, कृषि का उत्पादन तो कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट के टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, यानी निर्यात जब हम अपने देश में किसी खाद्यान्न की करते हैं जिसका कि बात G20 जैसे फोरम पे होता है, तो क्या हम एक घाटे का सौदा करते हैं कि फायदे का करते हैं। ऐसा प्रेशर ग्रुप क्रिएट होते हैं कि हमारा घाटा होने का बड़ा डर रहता है। ऐसी चीजों के उत्पादन के लिए हमको प्रेरित किया जाता है जिससे कि हमें ज्यादा फायदा ना हो, किसी और का फायदा हो। लेकिन हम ये रस्साकशी इस बात की होती है, हम ऐसी चीजों को लिए इन्वायरमेंट बनाए, पर्यावरण बनाए जिससे कि हमारे ज्यादा फायदा हो। और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है G20 में भी जिसकी बात हुआ कि जो हम खाद्य का उत्पादन करते हैं, कृषि क्षेत्र में जो कार्य होते हैं, हाँ हेलो, हाँ, जो कार्य क्षेत्र में, जो कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं उसमें पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है। ऐसा कहा जाता है विश्व में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। 3 सेक्टर्स हैं, एक है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, और तीसरा टर्शियरी सेक्टर यानी सेवा योजना वाला सेक्टर। तीनों सेक्टर्स में ऐसे कार्य हो रहे हैं विश्व स्तर पर जिससे कि पर्यावरण का बड़ा प्रदूषण हो रहा है। तो ये बातें हो रही कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, और कृषि में तो ये काम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बार बार मोदी जी ने भी कहा है कि वन वर्ल्ड, वन नेशन हो, एक पर्यावरण हो, एक पूरा परिवार हो। इसलिए ऐसा कहा है कि कृषि के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। ऐसा कार्य कोई भी देश हमारा 20 में से कोई न करे, या हम लोग को एक डिक्लेरेशन तैयार करना पड़ेगा जिससे कि ऐसे उत्पादन हो जिससे कि हमारे संसाधन क्षय। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, पूरे दुनिया में आजकल होड़ लगी हुई है गेहूं और चावल के उत्पादन की। पूरी जितना यूक्रेन और रशिया की वार हो रही है, इसमें आपने देखा होगा रशिया का गेहूं और यूक्रेन का गेहूं, वो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट उसका बाधित हो गया है। ब्लैक सी का जो ट्रेड एग्रीमेंट था वो बाधित हो गया है पूरी दुनिया में। और साथ में देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी और इंटरनेशनल लेवल पर मिलेट क्रॉप्स के लिए, उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। मिलेट क्रॉप कौन से हैं? मिलेट क्रॉप्स में है ज्वार, बाजरा, कोदो, काकून, इस तरह की जो है। इनमें यह है कि जब गेहूं और चावल और गन्ना प्रकार की फसलें हम जब उगाते हैं तो उसमें पानी की बड़ी आवश्यकता होती है, खादों की बड़ी आवश्यकता होती है। खाद बहुत ज्यादा अगर पड़ेगी, DAP, यूरिया, पोटाश, जो जितनी भी केमिकल फर्टिलाइजर जिसको कहते हैं, होगा उससे क्या कि जमीन क्षारीय हो जाएगी, मृदा की, भूमि की उत्पादकता कम हो जाएगी और पर्यावरण दूषित होगा। उसमें जल की भी बहुत आवश्यकता होती है। अगर जल बहुत ज्यादा दोहन हो जाएगा तो वाटर टेबल जो है पूरे दुनिया का, पूरे देश का, पूरे प्रदेश का गिरता जाएगा। इसीलिए ये ऐसी मिलेट क्रॉप जो है, बाजरा, ज्वार, कोदो, काकू, इनके 2-3 फायदे हैं। एक तो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी है। गेहूं चावल जब हम खाते हैं तो उसके अंदर शुगर जो कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेटेड शुगर कन्वर्ट होता है 2-2.5 घंटे में हो जाता है। लेकिन हम बाजरा और कोदो और सावा जब खाते हैं, या ज्वार जो खाते हैं, या मक्का जो खाते हैं, उसका जो शुगर कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट होता है वो 7-8 घंटे उसमें लग जाते हैं। तो जब 7-8 घंटे में जब कन्वर्ट होता है तो हमारे पैंक्रियाज को, हमारी जो बॉडी में पैंक्रियाज है, उनको आराम मिलता है और हमारी हेल्थ अच्छी रहती है।
हम 100 साल तक जिएंगे। लेकिन अगर गेहूं, चावल और शुगर केन वगैरह गन्ना वन्ना से या उससे उत्पादन की चीजें ज्यादा खाएंगे तो हमारा पैंक्रियाज कम में पड़ेगा और हिंदुस्तान को कहा गया कि डायबिटीज की, मधुमेह की दुनिया की राजधानी बन गई। तो इसी वजह से तो ये एक तो पर्यावरण का अंग मनुष्य भी है, मनुष्य को भी नुकसान होगा, मृदा को, पृथ्वी को भी नुकसान होगा, हमारे संसाधनों को भी नुकसान होगा। तो इस पे भी G20 में बात हुई थी कि किस तरह से हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की पॉलिसीज बना सकें जिससे कि हमारे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमको हमारी जमीन की उर्वरता ठीक ठाक रहे और हम उत्पादन भी करते रहे। साथ में हमारी जो कृषि की जब हम बात करते हैं भारत की, हमने पहले कहा कि G20 में टर्म्स ऑफ ट्रेड देखे गए, यानी व्यापार का, कृषि के जो व्यापार के जो संबंध है उसमें हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा, उसको डिसीजन उस पर लिया गया। तो उसको इस पर डिपेंड करता है कि हम क्या उत्पादन करें। अमेरिका एक, तो जब मैंने बताया कि जब 20 देशों का इतनी बड़ी समिति होती है तो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना पड़ता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन किया। उसमें हमारे तमाम डिमांड्स होती हैं, मांगे होती हैं, उनके तमाम असर्शंस होते हैं। जैसे हमारी आवश्यकता है कि हमारे देश स्तर पे आजकल क्या हमारे यहाँ फसलों में महामारी आ रही है, मतलब अनस्टेबल क्रॉप हो रहे हैं, हमारे यहाँ हंगर, भूख है, हमारे यहाँ और तमाम ऐसे विश्व के कंट्रीज हैं उनके यहाँ, हमारे यहाँ जलवायु प्रदूषित हो रही जिस तरह की फसलों, तो हम उसको चाहते हैं कि, और हमारे यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड जो खाद्य पदार्थ है उस पर कमी है, उसको जो हम चाहते हैं बेचना वो बेचा जाए। के साथ ही अमेरिका क्या चाह रहा है, G20 में भी परिलक्षित हुआ कि हम जितनी भी फसलें हैं वो तो उगाएं और उनके यहाँ से हम आयात करें, उनके यहाँ की जितनी भी प्रोसेस्ड फूड प्रोसेस्ड है या और चीजें वो करें। उसके साथ में फ्यूल इंडस्ट्री, यानी जो अब क्या हो रहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कमी होने के नाते अब अमेरिका, अर्जेंटीना और दूसरे कंट्रीज ने बायोफ्यूल की बात बताई कि खाद्यान्नों से बायोफ्यूल का, डीजल का और पेट्रोल का उत्पादन हो जिससे कि वाहन चलाए जा सके। तो एक बायोफ्यूल इंडस्ट्री की बात अमेरिका ने की इस बारे में, की बार में, और जो कि हमारे लिए बहुत उचित नहीं है, भारत के लिए उचित, लेकिन हमको उसको ये करना पड़ा। लेकिन हमारे लिए जो उचित है कि हमारे जो उत्पादन है उनको खरीदा जाए, उस पर उन्होंने बात की लेकिन उसको मूर्त रूप नहीं दिया पाया। हमारे जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे यहाँ जो खेतों का साइज है या जो उत्पादन होता है उसमें, या जो ओवरऑल सदियों से उत्पादन हो रहा, कम से कम सन 47 से बाद की बात करें तो इंडस्ट्रियल आउटपुट होता है और जो एग्रीकल्चर आउटपुट होता है उसमें टर्म्स ऑफ ट्रेड जो होते हैं, मैं इस तरह आपको समझाऊं, जो उत्पादन औद्योगिक क्षेत्र में होता है वो उसको सब कोई उसका उपभोग करता है और उसके लिए उसको बेचा जाता है, तो गांव वाले भी खरीदते हैं। तो जब गांव वाले जो 60% पॉपुलेशन जो औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादों को खरीदती है उसमें जो मार्जिन होता है, प्रॉफिट की दर होती है, जैसे आपने मोबाइल फोन एक खरीदा, एक मोबाइल फोन जो 10,000 का है उसमें से 2,000 का फायदा हुआ, लेकिन हमने अगर ये 2,000 का फायदा ये कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में, एक हमने उदाहरण मोबाइल में दिया, ले गया, ये प्रॉफिट मान लिया। लेकिन जब कृषि क्षेत्र से गेहूं एक कुंटल लिया गया तो उसमें जो मार्जिन हुआ कृषि क्षेत्र के कृषक का, वो तुलना में प्रतिशत के फॉर्म में बहुत कम हुआ। तो जब हम औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन लेते हैं, जो कि औद्योगिक क्षेत्र के भी लोग लेते हैं, सर्विस सेक्टर के भी लेते हैं और कृषि क्षेत्र के भी लेते हैं, उनको तो फायदा इंडस्ट्रियल को ज्यादा होता है, लेकिन एग्रीकल्चर अपने उत्पादन को बेचने में फायदा कम होता है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं, अर्थशास्त्र वाले जानते हैं। तो हमेशा से पारंपरिक रूप से टर्म्स ऑफ ट्रेड विरोधी रहे, एडवर्स रहे एग्रीकल्चर सेक्टर के मामले।
इसी वजह से हमेशा से सदियों से हमारे देश में कृषि क्षेत्र में रहने वाले जो आबादी है उनकी जीवन शैली, उनकी आमदनी, उनका न्यूट्रिशन लेवल सदैव कम रहा है। इस बात का प्रयास किया जा रहा है, G20 में इस पे बात हुई है कि हमेशा क्या किया जाए कि हमारा जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट में कृषि क्षेत्र का हिस्सा बढ़ जाए। आज की डेट में जितना जीडीपी होता है उसमें 15% मात्र एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है। कहने का मतलब है जब तक हमारे देश में कृषि क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ेगा तब तक हम इस स्थिति में नहीं आएंगे कि हमारा देश बढ़ेगा। जिस देश में 60% जनसंख्या आमदनी कम है, उनके उत्पादनों का सही मूल्य नहीं मिलेगा और 40% के औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के बदौलत इकोनॉमी की जीडीपी या ग्रोथ बढ़ रही है, उसका भविष्य क्या होगा। तो G20 की मीटिंग में इस बात की, हैदराबाद में जून में एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि सभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर 20 देशों के इस पे बात की थी, उस पर उन्होंने गहन चिंतन किया। लेकिन दुर्भाग्य से जो फाइनल डिक्लेरेशन में कृषि क्षेत्र के भारत या भारत जैसे और देशों में जो आय, लो आय का जो एक ट्रैप होता है उसको खत्म करने के लिए जो नीतियां क्या क्या की जाए उसको स्पेल आउट किया गया, लेकिन उसको डिक्लेरेशन में शामिल नहीं किया जा पाया। अभी जो सितंबर में G20 की मीटिंग की, ये एक बड़ा एक निराशा है। अर्थशास्त्री के रूप में बोल रहा हूँ, अपने किसी पॉलिसी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, प्रयास किया गया लेकिन अमेरिकन हेजेमनी के आगे हमारे चल नहीं पाए। डिक्लेरेशन में क्या हुआ, बायोफ्यूल के ट्रेड को एक तरफ तुम भूखमरी में, एक तरफ से फसलों की अनसर्टेनिटी में, एक तरफ से क्लाइमेट चेंज के विरोधाभास हम फंसे हुए भारत जैसे और देश, तो दूसरी तरफ से हमसे कहा जा रहा है कि अपने फसलों को आप अपने खेती में आप फसलें ना उगाइए, बायोफ्यूल के लिए आप क्रॉप उगाइए और उसको बेचिए, और बेचने का फायदा कौन होगा, किसको होगा, बड़े कंट्रीज को, अमेरिका जैसे। तो बायोफ्यूल इंडस्ट्री को प्रमोशन के लिए बातें हुई और हमारे जो देश में जो भूख की, हंगर रिमूवल की बात, क्लाइमेट चेंज की बात और फसलों के इम्प्रूवमेंट की बात और कृषकों के आय की बात, इसमें बात नहीं की। इसकी एक परिप्रेक्ष्य हम कहना चाह रहे हैं कि हम बात तो करेंगे भी G20 की, लेकिन अपने देश के अंदर भी हमको अपनी स्थितियां सुधारनी है। अपने देश के अंदर जिस प्रकार के वातावरण चल रहा है, जिस तरह की नीतियां चल रही हैं, हम आपको उदाहरण के रूप में एक बात बताते हैं। हमारे देश में ये पूरे कृत संकल्प है हमारी सरकार कि किसानों की आय दुगनी हो। इसके लिए 2020 में मैंने अपने इंस्टीट्यूट में, उस जमाने में कार्यरत था, डायरेक्टर था, एक जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेशन, जो एकेडमिक होता है वो बड़ा पुअर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो हमने नहीं किया लेकिन रिसर्च का काम ही करते रहे। तो 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए हमने काम किया कि डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, तो वो काम मिला था, अभी भी वहाँ चल रहा था कि 17-18 से लेके 22-23 में क्या किया जाए कि क्या दोगुनी हो जाए। तो हमने जो 2020 में काम किया था उत्तर प्रदेश के लिए, उस पर अभी बता रहे हैं, उसमें ओवरऑल जो कृषक की आय थी 7,065 रुपया प्रति माह की। उसको अगर दुगना करना है उसको कितना होना चाहिए, 14,000 होना चाहिए। और रेट ऑफ ग्रोथ की एग्रीकल्चर की 2.5%, इसको करने के लिए 5% की रेट ऑफ ग्रोथ एग्रीकल्चर की होनी चाहिए, तब जाके 7,000 से लेके 14,000 रुपया प्रति परिवार प्रति माह आय होगी। ये मोटा आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसमें तमाम बाधा है। सबसे बड़ी बाधा तो यही है कि कृषि उत्पाद में ये ओवरऑल हमने बताया, इसमें सीमांत कृषक है और छोटे कृषक है, मध्यम कृषक है, बड़े कृषक है। बड़े कृषकों की आय तो प्रति माह प्रति परिवार करीब 15,000 से ऊपर थी, लेकिन छोटे कृषकों की आय इन्हीं में से एवरेज 7,000 में से 4,000 से भी नीचे थी। तो ये जो डिस्पैरिटी है, विषमता है कृषि आय में, इसको जब तक देशव्यापी स्तर पर दूर नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग
ये नहीं कर पाएंगे कि हमारी आय दुगनी। एक तो हम जितना भी प्रयास करें उसमें सबसे बड़ी बाधा हो जाती है कि जहाँ 70% 80% जोतें ऐसी है जो कि जिनकी की आय कम है। आय कम इसलिए है कि उनकी प्रोडक्शन कम है, उनकी डिमांड कम है, उसकी मांग कम इसलिए कम है। इस प्रकार की समस्याएं ये तो इनकी, और उसके आगे जो नेशनल स्तर पे उसकी जो प्रॉब्लम है, सरकार आज की डेट में थोड़ा नहीं कर रही। 4 लाख करोड़ रुपया 4 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष कृषकों को विभिन्न मदों में पैसा दे रही। किन किन मदों में दे रही? एक तो खाद पे सब्सिडी दे रही है। दुनिया भर में 1,000 रुपया $1,000 पर मेट्रिक टन यूरिया का दाम है। हमारे देश में 1 मेट्रिक टन यूरिया का दाम $70 है। दुनिया में कहीं इतनी ज्यादा सस्ती यूरिया नहीं होगी जितनी की इंडिया में। उसी की तरह से इरिगेशन सब्सिडीज है, सिंचाई की सब्सिडीज है। उसी तरह से आपको 6,000 रुपया प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जाता, तो उसका लागत हुई 60,000 करोड़ रुपया हो गया। फसल बीमा योजना हो गया। ये सब तमाम ऐसी चीजें हैं कि इनको अगर जोड़ा जाए, हमने जोड़ा है, तो एक पहली बात क्या हो गई कि कृषि आय कम है। और कृषि आय कम का क्या वजह है कि उसकी डिमांड कम है। कृषि उत्पादों के एक तो लागत ज्यादा है, लागत ज्यादा सब्सिडी के बावजूद भी है, लेकिन उनकी उत्पादों की कीमत बहुत कम है। हमने बताया ना, मोबाइल फोन में तो फायदा ज्यादा मिल जाता है, लेकिन गेहूं या धान में फायदा कम मिलता है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है कृषकों के विरोध में है और इंडस्ट्री सेक्टर के फेवर में। तो ये दूर करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिमांड पैदा करनी चाहिए। कृषि पदार्थ की जब डिमांड ज्यादा होगी तो उसके दाम ऊपर अपने आप ऊपर पड़ेंगे। सबसे एक अर्थशास्त्र में एक नियम है, वो भी आपको बताना जरूरी है कि एंजल्स लॉ एक होता है। कृषि पदार्थों की जो सबसे प्राकृतिक रूप से एक जो डिसएडवांटेज है कि एंजल्स लॉ कृषि में लगता है। जब आपकी आय 6,000 रुपया महीना होगा तो आप खाद्य पदार्थों पे, गेहूं, चावल और दालों पे ज्यादा खर्चा करोगे प्रतिशत अपनी आय का। लेकिन 6,000 से जब 60,000 हो जाएगा तो प्रतिशत जो खर्च होगा आपका कृषि पदार्थों पे कम होगा, बाकी अकृषि पदार्थों में ज्यादा होना है। बढ़िया बढ़िया साड़ी खरीदोगे, बढ़िया बढ़िया शर्ट खरीदोगे, बड़ी बढ़िया खरीदोगे, महंगे एप्पल मोबाइल फोन खरीदोगे, और खाद्य पदार्थ में उतने उस प्रतिशत में आपका खर्चा नहीं होगा। तो with the increment of every increment of income, the percentage expenditure on the consumption of food grain item keeps on reducing. इसको अंग्रेजी में कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में एप्लीकेशन ऑफ एंजल्स लॉ। एंजल्स लॉ इसको कहते हैं। तो एक नैसर्गिक रूप से कृषि का एक डिसएडवांटेज है कि उसके आज जो आय बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम होगी। तो डिमांड बढ़ाने का दूसरा क्या है? डिमांड बढ़ाने के काम है कि कृषि क्षेत्र में भी लोगों की आय बढ़े, 60% लोगों की भी आय बढ़े, क्योंकि शहर में सबको तो नौकरी मिल नहीं सकती। इंडस्ट्री से करेंगे या सभी सेक्टर में काम करेंगे तो कृषि क्षेत्र में कृषि ही से उत्पादन मिलेगा। उत्पादन कैसे होगा? तो उनके दाम बढ़ाया जाए। दाम बढ़ाने के दो कारण, दो रास्ते हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कृषि लागत कम हो, या दूसरा है उत्पादों के दाम बढ़े। कृषि लागत कम करने के लिए सरकार काम कर रही है। भारत सरकार 4 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा प्रतिवर्ष अपने बजट में से दे रही है, जो सब्सिडी के फॉर्म में दे रही है। इरिगेशन सब्सिडी होगी, फसल बीमा योजना दे रही है, फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रही है, और इम्प्लीमेंटेशन में सब्सिडी, सब चीजों में दे रही है, इम्प्लीमेंट्स में सब्सिडी। तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा खराब पॉइंट है कि उत्पादन का दाम नहीं बढ़ रहा। जब कृषि के उत्पादन का दाम बढ़ना होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का नाम सुना होगा आपने, एमएसपी सुना आप लोगों ने? स्टूडेंट हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? हमारा मन था कि स्टूडेंट भी हमारी बात सुने। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस है जिसपे भी सरकार कृषि उत्पादों का दाम निश्चित करती, उससे कम में नहीं खरीदेगी। तो जब कृषि उत्पाद, जब गेहूं, खासकर भारतवर्ष में या उत्तर भारत में गेहूं या धान का या गन्ने का कृषि उत्पाद का
एमएसपी प्रोक्योरमेंट होता है, सरकारी खरीद होती है। उस समय क्या किया जाएगा, अब की बार क्या किया था जब गेहूं का उत्पादन हुआ 2.5 मिलियन मैट्रिक टन एफसीआई से निकाल के बाजार में मंडियों में डाल दिया गवर्नमेंट ने। डाल इसलिए दिया कि एमएसपी पे हम खरीद सकें, क्योंकि मार्केट जो प्राइस था गेहूं का एमएसपी से ऊपर था। जब आपने एमएसपी को जो इतना 2.5 मिलियन मैट्रिक टन गेहूं डाल दिया तो बाजार में रेट डाउन हो गए। जब डाउन हो गए तो 20-22 रुपया जो गेहूं का 20-21 रुपया का है तो उसमें खरीदना मजबूरी हो गई। तो ये सरकार का जो इसी तरह से कभी कभी स्टॉक मार्केट में गेहूं या धान के जो है उसमें कमोडिटीज को बंद कर देना, स्टॉकिंग लिमिट कम कर देना, इस तरह के जो सरकार के जो प्राइस स्टेबलाइजेशन का मूवमेंट है उससे क्या होता है कि गेहूं या धान का मूल्य एक लेवल से बढ़ने नहीं पाता। उससे क्या होता है, आप दाम एक तरफ ना घट, जब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन नहीं घट पाती है या कि सब्सिडी के बावजूद भी ऐसी फोर्सेस काम करती है, उधर प्राइस नहीं बढ़ पाते हैं। तो प्राइस नहीं बढ़ पाते हैं तो उससे क्या होता है कि फायदा बहुत कम हो जाता है। तो आप जितने भी गांव में देखें, मेरे ख्याल से हम मुझको लेते हुए सभी लोग गांव की अर्थव्यवस्था में वाकिफ है। कोई कह नहीं सकता कि गांव के खेती से हमें बड़ा लाभ हो रहा है। हर परिवार की इच्छा होती है कि हमारे परिवार में एक लड़का या लड़की चाहे चपरासी बन जाए, चाहे क्लर्क बन जाए, चाहे टीचर बन जाए, चाहे किसी दुकान में मजदूरी कर ले, तभी उसकी खेती जो है वायबल होती है, तभी खेती कर सकता है। तो इस प्रकार की ऐसी चीजें इसको खत्म करना है, इसको हमको देखना पड़ेगा, संजीदगी से देखना पड़ेगा, वो इस तरह से देखना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो हमारे मित्र एक है प्रोफेसर अरुण कुमार है, अभी रिटायर हो गए हैं वो भी, उन्होंने अपने एक लेख में कहा है कि एक ऐसी वेजेस का निर्धारण करना चाहिए कृषि क्षेत्र। और देखिए कि जब देखा जाए विभिन्न आय जो होती है तो मजदूरी की आय जो है ज्यादा है और कल्टीवेशन से आय कम, तो लोग मिनिमम वेज फिक्स करनी चाहिए, चाहे उसको मार्केट फोर्सेस भी नहीं तय करने चाहिए। जैसे 400 रुपया पर डे ये नहीं, अगर 800 रुपया या 700 रुपया जैसे गेहूं और धान का प्राइस किया जा सकता है, इसलिए कृषि मजदूर की एक मजदूरी तय कर देनी चाहिए, तय हो जाएगी। उसी प्रकार से खाद्यान्न का भी रेट तय करना, जो एमएसपी तय तो कर दिया, लेकिन कितने परसेंट लोगों का जो खाद्यान्न एमएसपी पे खरीदा जाता है, शायद 6-7% कृषक भी नहीं ले, मतलब बाजार ही में बेचते हैं। तो कृषि मजदूरी उनको जो मिनिमम करनी चाहिए। और जो तीसरी बड़ी बात कही, जो हमारे दूसरे मित्र हैं जो एग्रीकल्चर में जो है कंसल्टेंट है अशोक गुलाटी जी, उनके साथ हम मध्य प्रदेश गए थे। एक कमर्शियल फार्मिंग करनी चाहिए। हम लोग गए थे 100 एकड़ भूमि में मध्य प्रदेश में मेडिसिनल प्लांट उगाए जा रहे हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर उगा रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर क्या कर रहा है कि मेडिसिनल प्लांट ऐसी जमीन को उगा रहा है जहाँ गेहूं और धान बहुत कम होता है, उनके सिंचाई के साधन सिंचाई इफेक्टिव नहीं होती है और खाद इफेक्टिव नहीं होती। उन्होंने क्या कर रखा है उसपे कि वो बीज दे रहे हैं, प्रोडक्शन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपका इस रेट पे आपका ले लेंगे, और मेडिसिनल प्लांट गेहूं धान वाली जमीन पे। तो 100 एकड़ में दिया और 5000 एकड़ का उसने और ठेका ले लिया है कॉर्पोरेट ने। तो किसान को क्या होगा, उसको रिस्क खत्म हो जाएगा, फसल बीमा में कवरेज तो है नहीं जाता, लोगों को रिस्क खत्म हो जाएगा और उसको एश्योर्ड इनकम हो जाएगी। तो उसकी जो गेहूं और धान की वजह से जो अधिक सिंचाई करनी पड़ती है, अधिक खाद देनी पड़ती है, तो कॉस्ट कम होगी, प्लस उसका एश्योर्ड इनकम होगा। दूसरा कॉर्पोरेट सेक्टर का आदमी मिला, जो सरकार का सोयाबीन का बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश सोयाबीन का प्रोक्योरमेंट प्राइस 4300 रुपया, उसने कहा हम 6000 रुपया पर क्विंटल में सोयाबीन आपसे खरीदेंगे, और उसने बीज भी उनको सप्लाई किया। और वो क्या, उसका कैसे, वो जाके उससे टोफू बनाएगा, सोया आइसक्रीम बनाएगा, सोया दही बनाएगा। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, विविधीकरण कृषि के प्रोसेसिंग का, और कृषि के प्रोसेसिंग में सोयाबीन का तेल के अलावा टोफू बनाना, आइसक्रीम बनाना, दही बनाना, दूध बनाना, ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग इसको कहते हैं। इसी प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन में एक तो फाइनल जो वैल्यू एडिशन होता है, उत्पाद वो बढ़ा,
कृषि की आय बढ़ी, उसका रिस्क कम हो गया, ओला पत्थर और सूखा और बाढ़ से उसको फुर्सत मिल गई, उसको एश्योर्ड इनकम हो गया। तो ये हमने उदाहरण आपको कहूँ, एक मेडिसिनल प्लांट का उदाहरण दिया जिसमें मैं खुद गया था अशोक गुलाटी के साथ, एक सोयाबीन का उदाहरण दिया जो कि मैं खुद गया था उनके साथ, जिसने कि 4300 रुपया की जगह 6000 रुपये सोया करंट हुआ विद अश्योर गारंटी कि आप हम खरीद ही लेंगे 6000 रुपये। इस प्रकार की, तो इसमें क्या आपको मिला? इसके मिला कि हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड जो होते हैं, हम चीजों को डिक्टेट करने की स्थिति में आ गए कि नहीं, हम इस रेट पे आपको बेचेंगे और हमारी लागत कम होगी, तब जाके कृषक की आय बढ़ेगी। जब कृषक की आय बढ़ेगी तो वो भी, उसको डिमांड होगी। जब डिमांड होगी तो एक तरफ तो गेहूं धान की खेती कम होगी, जब उसकी सप्लाई कम होगी तो डिमांड होगी, तो गेहूं जो है 20 रुपया से बढ़ के 30 रुपया बिकेगा। जब मोबाइल फोन 5,000 की जगह लोग 15,000 या 50,000 का ले सकते हैं, तो गेहूं क्या की जगह 30 का नहीं ले सकते? 30 का क्या, 40 रुपए का गेहूं का आटा लोग खरीद रहे, लेकिन मार्जिन कौन लेता है? कृषक नहीं लेता, बनिया लेता है, ट्रेडर लेता है। तो ये जो शैकीन, इसी वजह से हमारा किसान जो है परेशान है, और हमारा G20 जैसे फोरम पे हम अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बार्गेनिंग पावर है वो बहुत कम है। तो ये थोड़े उदाहरण हैं जो मैंने आपको दिए कि किस तरह से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एग्रीकल्चर में कम की जा सकती है, किस तरह से प्राइस सप्लाई साइड बढ़ाया जा सकता है, सरकार जो दोहरी नीति है उसको किस तरह से रोका जा सकता है। सब्सिडी तो आप दे रहे हैं, लेकिन दाम नहीं कृषि उत्पादों को बढ़ने दे रहे हैं। हम कहते हैं लिमिटेड जगह पे आप गेहूं या चावल या गन्ना उत्पादन करिए, इससे कम खाद लगेगा, कम पानी लगेगा, आप ज्यादा बाजरा उगाइए, ज्यादा ज्वार उगाइए, ज्यादा मिलेट उगाइए, साथ में आप मेडिसिनल प्लांट उगाइए, साथ में आप टोफू जैसे फसलें उगाइए, और कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर करिए। इस तरह से जब 2-4 साल में पहला तो कम हो गया, डबल फार्मर इनकम हो जाएगी, जो 7,000 उत्तर प्रदेश का केस बताया प्रति व्यक्ति प्रति माह आय, वो 14,000 15,000 हो जाएगी। तब हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, तब कृषि उत्पादों का दाम बढ़ेगा, तब 60% जो पॉपुलेशन उसका जीवन स्तर उठेगा, तब वो शहर में भागने की आवश्यकता उनको नहीं महसूस होगी, तब हमारी ओवरऑल GDP वो बढ़ेगी, तब कंधा से कंधा मिला के गाँव का आदमी शहर के साथ रहेगा, गाँव के आदमी को शहर के सामने खड़े होने में शर्म नहीं लगेगी, शिक्षा के स्तर पर शर्म नहीं लगेगी, कपड़े के स्तर पर शर्म नहीं लगेगी, अपने रंग या सेहत के स्तर पर कम लगेगी। ऑल आर द फंक्शन ऑफ इनकम। इनका कम होती है तो कपड़े कम होते हैं, शिक्षा कम होती है, स्वास्थ्य कम होता है, घर छोटा होता है, ये सब चीजों से। और देश की GDP भी उस स्तर पर नहीं रुक सकती जिस स्तर पर होनी चाहिए। 60% लोगों की जो आय 40% लोगों की आय के बराबर लाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जो हमको नीतियां हैं, जिस तरह से इंटरनेशनल फोरम पे हमको डिक्टेट टर्म्स करने पड़े चाहिए, वो हम करेंगे। हम अपनी इन प्रॉब्लम को रख सके, उसको भी डिक्लेरेशन का पार्ट बन सके। खाली बायोफ्यूल के इंडस्ट्री को और बढ़ाया जाए, उसी को डिक्लेरेशन में शामिल किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस पे हम लोगों का काम चल रहा है, लेकिन तमाम नीतियां हैं, तमाम ऐसे फोरम हैं, तमाम ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं कि अपनी रिपोर्ट बना के सरकार को दे रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से, इंटरनेशनल कारणों से, नेशनल कारणों से, पॉलिटिकल कारणों से सबके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे जो भी सरकार सत्ता में रहती है इच्छा नहीं, कौन सरकार चाहे कि हमारे समय में हमारा कृषि उत्पाद घटे, हमारी GDP घटे, हमारा जो इंटरसेक्टोरल बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो, लेकिन देयर आर रीजंस। प्राकृतिक रीजन है, अप्राकृतिक रीजन है, इकोनॉमिक रीजन है, इंटरनेशनल रीजन है, सब बातें इनको ध्यान रखना, और एक्सपर्ट लोग इस पे काम कर रहे हैं। ये बातों को मैं आपके सामने लाना चाहता था, आप थोड़ा इस बातों के लिए समझ डेवलप करें, और समय समय पे कुमार साहब अपने कॉलेजेस में, मंजूरी के अपने कॉलेजेस में एक्सपर्ट्स को बुला के, और जो छात्र इससे संबंध है, जो बल्कि फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम कराया गया, जो टीचर्स हैं जिनके अंदर क्षमता है लेकिन उनका एक्सपोजर नहीं, उनको बताइए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। सतही
आप हम जो अखबार वाली जो लैंग्वेज और या विषय वस्तु होती है और जो टेक्निकल विषय वस्तु होती है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। तो जो विषय की जो टेक्निकल विषय वस्तु है, जैसे आप अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, उसकी जो लिंग्विस्टिक्स की गहराइयाँ जैसे आप जान सकते हैं उसकी हम नहीं जान सकते। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र या और किसी भी शास्त्र की, समाज शास्त्र की या पॉलिटिकल साइंस की जो गहराइयाँ हैं, एज ए टीचर आपको समाज में डिसेमिनेट उनको करना है। G20 की जो प्रॉब्लम हुई है उनको समाज के सामने लाना है। प्रॉब्लम क्यों है, उनको निवारण कैसे हो सकता है, इसको समाज के सामने आना है। समाज के सामने डायरेक्ट नहीं आ सकता, मैं लाऊंगा आपके सामने, आप ले जाएंगे समाज के सामने, आपके छात्र का वैल्यू एडिशन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार मैं इतने सफल और इतने बड़े थीम पे और इतने रिमोट एरिया में आपने साहस दिखाया और साहस दिखाया, संकल्प लिया और संकल्प लेने के बाद करके दिखा दिया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आपका कॉलेज, आपके प्रिंसिपल, आप मंजरी जी और सभी लोग इसमें हैं, सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इतना बड़ा साहस बहुत कम लोग करते हैं, आप लोगों ने करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का बड़प्पन कह रहे थे कि मैं तो विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया कि विद्यार्थी सर हैं, विद्यार्थी मैं हूँ। इतना इफेक्टिव और इतना सिंपल से वर्ड्स में अपनी बात को रख देना बड़ा गंभीर विषय था सर ने जो उठाया, और मुझे लग रहा शायद उनका 1/10 भी पेपर प्रेजेंट नहीं हो पाया, इतना सारा मटेरियल सर लिए हुए थे, हमने झांक करके देख लिया है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें सुनते हैं, भाषणों में भी, दुनिया भर के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी। जैसी थीम मैडम मजरी जी ने बताई थी, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, सारी पृथ्वी को जो प्रभावित करे, जन जन तक जो छुए, ऐसे विषयों को लेकर के भारत ने अपनी अध्यक्षता में इस समिट को आयोजित किया। सर ने इसमें ओजोन लेयर का वाटर टेबल जो हमारी डिप्लेट हो रही है डे बाय डे, इन रिसोर्सेज के मेंटेनेंस की बात की। परंपरागत फसलों को हम सुनकर के बड़ा अजीब सा अनुभव करते हैं, लेकिन सर ने बताया कि डायबिटीज का किस प्रकार से हम इलाज कर सकते हैं केवल अपनी परंपरागत फसलें जैसे ज्वार बाजरा आदि, चूंकि 8 से 10 घंटे में जाकर के कहीं कन्वर्ट होती है शुगर में। सर ने बहुत सारी फसलों के उत्पादन से संबंधित भी बातें बताई और बताया कि कैसे 60% जनसंख्या हमारी प्रभावित रहती है, क्योंकि उनको उनकी फसलों का वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता। तो जीडीपी में कृषि का योगदान सर्वोपरि है, लेकिन इसको और भी अधिक हम बढ़ा सके, इसके लिए सर ने काफी दिशाबोध कराया है। आय दुगनी करने के लिए भी सर ने 7,065 रुपए का जो सरकार के समक्ष अपना प्रस्ताव की बात कही थी, और वास्तव में उसी के आसपास सरकार ने माना भी, और इसी बात को पूरे संसार के समक्ष इस समिट के थ्रू रखा गया। अनेक प्रकार की सब्सिडी और बीमा की बात आपने की, और सर आपने बताया कि दाम बढ़ाने के 2 ही रास्ते हैं कि हम कृषि लागत को कम कर दें और उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों का दाम बढ़ा दें। शायद बहुत छोटे से और सारगर्भित शब्दों में आपने सरलता से इस बात को कह दिया। और स्पेशली हम लोग कई बार सोचते हैं कि मेरे पास तो 1 कट्ठा जमीन है, 1 बीघा जमीन है, मैं तो बड़ा किसान नहीं बन सकता, लेकिन मेडिसिनल प्लांट के माध्यम से सोचो, एक छोटे से गमले के माध्यम से भी हम बहुत कुछ आय अर्जन कर सकते हैं। तो सर ने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया कि कैसे वहां 100 एकड़ से 5,000 एकड़ तक बात पहुंच गई, और अपने किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने की बात, दुगना ही नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाएगी। सोया के माध्यम से आइसक्रीम, दही, दूध आदि बनाने की बात आपने रखी। सर इतने सारे पॉइंट बनाए, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने हमें बताया कि किस प्रकार से हम फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करके अपने शिक्षकों का अद्यतन एक ज्ञान में हम उनको कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सजेशन
हमारे लिए, और सर हम कोशिश करेंगे महाविद्यालय की ओर से कि हम इस प्रकार आगे बढ़ाएं। सर, आपने अपने वैल्यूएबल वर्ड से हमें प्रभावित ही नहीं किया, बल्कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमारा क्या मार्गदर्शन रहेगा, किस मार्ग पर हम चलेंगे, ये आज के आपके इस एक्सपर्ट जो लेक्चर हुआ हमारे लिए एक बहुत बड़ा विजडम वर्ड है। हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं सर, और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार से सानिध्य मिलेगा। अगले पैनलिस्ट हमारे श्रीलंका से हैं। मैं उससे पहले अपने मध्य अपने जो स्पॉन्सर्स हैं उनमें से एक हमारे मध्य उपस्थित हैं। अच्छा, चलिए, मुझे आदेश हुआ है अभी तक we have 3 factors here. One speaker, offline, maximum audience, and some of audience from online platforms. But this time we have the panelists also online, audience also online, and some of the participants in audience online platform. I welcome you all participants and experts and the audience is diet. The second panelist expert speaker today, a young chap from Sri Lanka. I think he is the youngest speaker. He is Kambudakala Odayanga from Sri Lankan University. And for introduction, brief introduction, I would like to put before you. He is lecturer in economics, Department of Economics, University of Sri Jayawardhanapura, Sri Lanka. He is a great scholar. He has publications, more than 8 publications in different journals of national and international review. Professionally, he actively participated in different workshops and trainings. He participated in numerous conferences. He achieved scholarship from European Union, especially from Poland country. He is the best research paper presenter award winner. He has different types of leadership qualities. One of the qualities I want to put before you, Sir Udayanga has been the president of Economics Student Association in University of Kelania. He is a good debater also. He has contributed in community services also. He received President's Award for Environmental Pioneering Services at Colombo, Sri Lanka. So this is the brief introduction of Udayanga sir. Good afternoon, sir. Udayanga sir, are you listening to me? Udayanga sir, are you listening me to? Hear me? Sir, Hello. are you listening to me? Am I in right now? Ji sir, now it's your turn to share your views, expert views for our audience, for our students. We are waiting. Udayanga sir, are you listening to me? I'm trying to Sir, share my PowerPoint. Thank you.
Can you see my PowerPoint? Hello? Yes, sir. Hello. Hi, can you see my screen? Yes, yes. Okay, okay. Thank you very much and very good afternoon all. I am Tarindu Udayanga, a lecturer attached to the Department of Economics of the University of Sri Jayawardenepura, Sri Lanka. So the topic that I have selected to present in this forum is Sri Lankan economic crisis and the ongoing policy reform. So this is the outline of my presentation. I would like to discuss on the socio-economic crisis in 2022 that Sri Lanka faced and the reasons for the economic crisis. I will discuss this part as a review of existing literature, and then I will move to the ongoing policy reforms. And finally, I hope to discuss on the topic that will Sri Lanka be benefited from India's G20 presidency. So first, I would like to move to the first part of my presentation, socio-economic crisis in 2022 that Sri Lanka experienced. So if you look at the PowerPoint in 2022, the real economy contracted by 7.8%, recording the deepest contraction on record after the independence of Sri Lankan history. So if you look at the overall size of the economy in 2021, we had 88.5 US dollar billion economy, but it contracted by 7.8% by coming to 77.1 US dollar billion economy. If you compare the per capita gross domestic product in 2021, we had 3,997 US dollar per capita GDP. But when it comes to 2022, you can see that 77.1% US dollar billion economy with 3,474% per capita GDP US dollar billion. So when we move into the inflation, the Sri Lankan inflation reached a historic high in 2022. The headline inflation was 12.1% in December 2021, but when it comes to the September 2022, we experienced 69.8% headline inflation, and the core inflation was 50% 2%, and the food inflation was 94.9%, and non-food inflation was 57.6% in 2022. So basically, based on the Colombo Consumer Price Index, inflation reached a historic high at 69.8% in September 2022. So when considering the factors influence this inflationary pressure experienced in Sri Lankan economy, we can observe several factors, specifically the depreciation of the Sri Lankan rupees and the shortages that we observed in the supply side and the large monetary financing and the global energy and food inflation contributed this high inflationary pressure. So these factors caused a deep effect on all aspects of society with a significant increase in inflation. So when we focus our attention on the external sector met with a severe balance of payment stress in 2022. The forex liquidity dried causing shortages of essential, and on the other hand, workers' remittances also fell to US dollar 205 million by February 2022. Furthermore, the trade deficit also widened. In December 2021, we had 1.1 US dollar billion trade deficit. And when considering the earnings from tourism also declined. In 2020 September, we received only 41 US dollar million. So usable official reserves also fell to critically low levels, and foreign currency debt servicing soared. Furthermore, the gross official reserve depleted in 2022 October. It was only about US dollar 1.7 billion. More specifically, the exchange rate was allowed a measure adjustment, and market speculation caused a large overshooting. So the Sri Lankan rupee depreciated by 44% comparing to the US dollar.
And the vulnerabilities in the power and energy sector heighten amidst forex shortages, causing significant loss of economic activity. So if you look at the May to June months in 2022, we went through severe fuel shortages. As a result of that, by February 2022, we experienced daily scheduled power cuts. But when it comes to April 2022, and the power cuts extended to over 10 hours per day. So you can imagine the difficulties, the repercussions caused by the Sri Lankan society during this time. So the fuel crisis in 2022 led to severe social inconvenience and unrest as well. Basically, there were two reasons caused this development. The worsened financial position of the Ceylon Petroleum Corporation, the CPC, and the sparse liquidity in the domestic foreign exchange market contributed this development. And the excessive hoarding of stocks by the people and long queues for fuel due to inconsistency in fuel distribution and uncertainty in the availability of fuel. So when we discuss the fiscal sector imbalances that persisted for several decades reached a tipping point in 2022. In 2022, the government revenue was only 8.2% of the gross domestic product of the country, and it recorded one of the lowest in the world. And when we look at the government expenditure side, it was 18.5% of GDP, and expenditure remained rigid when the government revenue was very lowest in the world. So, as a result of this situation, the overall fiscal deficit was 10.2% of gross domestic product, the third highest deficit in 20 years of Sri Lankan history. Furthermore, the government debt was 113.8% of the gross domestic product. So the central government debt reached an unsustainable level by 2020. Based on this situation, a series of sovereign credit rating downgrades by international rating agencies that started in January 2020 was intensified during the second half of 2021 through early 2022, hence constrain the access to foreign financing. So just imagine the barriers faced by the Sri Lankan economy when it comes to 2022. We went through both internal and external barriers because of this balance of payment and fiscal deficits. So, economic crisis led to severe hardships to individuals and businesses in Sri Lanka based on these circumstances. So, rising inflation led to severe deterioration of living conditions for the public and substantial hardships to business as well. And we observed that falling real wages. If you look at the public sector, the real wages declined by 20.6%, and in the formal private sector, the real wages declined by 22.7%, and informal private sector, the real wages declined by 17.5%. So the acceleration in consumer prices had a severe impact on vulnerable households, exacerbating pre-existing income inequalities. So if you look at the national poverty line, when it comes to the December 2022, the national poverty line increased to 13,777 rupees. It was 74% increase in year on year in 2022. So the scarcity of essential items amidst dearth of foreign exchange liquidity caused significant social suffering as well. And Sri Lanka's progress in eradicating poverty has stalled with heightened economic vulnerabilities from multiple fronts during this crisis. Based on these circumstances, severe economic hardships led to both public annexity and political upheaval as well. If you can remember the Sri Lankan political history in 2022, one of the executive president resigned from his post considering this socio-economic hardships and difficulties arising in the Sri Lankan economy. So if I come up with a brief summary, the factors that
influenced the socio-economic crisis in 2022, we can identify several factors: the low GDP growth over several years and the persistent twin deficits, both the fiscal deficit and the balance of payment deficit, and rating downgrades, limited access to foreign financing, and high inflation and de-anchored inflation expectations, and falling tax revenue, unsustainable public debt, increase of global food and energy prices, and power cuts, fuel and gas shortages that we went through, and increased monetary financing. Furthermore, the new zero level of usable official reserves and substantially increased inflation adjusted poverty line, and domestic and foreign exchange market liquidity pressures, scarcity of essential items, heightened social unrest and political upheaval, and ban on the importation of non-organic fertilizer, and low earnings from tourism and workers' remittances, and finally, misaligned exchange rate. So these factors contributed the socio-economic crisis that Sri Lanka went in 2020. However, the credible and transparent policy measures prevented further worsening of the crisis and helped Sri Lanka revive in socio-economic stability. So if you look at the immediate policy measures obtained by the central government and the central bank, the significant tightening of monetary policy and stabilizing the exchange rate through market guidance and supply of foreign exchange for essential item importation, and foreign exchange and rupee liquidity management, import restrictions, and continuous financial sector oversight, and announcement of the debt standstill and commencing debt restructuring process. And most importantly, the negotiation with the International Monetary Fund for an extended fund facility arrangement and substantial fiscal tightening and strengthening social safety nets and specifically state-owned enterprises reform. So these immediate policy measures provided some kind of manageable environment to Sri Lankan economy, even though when Sri Lankan economy went through a very difficult time in 2020. When it comes to 2023, the economy come up to some kind of manageable level based on the immediate policy actions taken by the government and the central bank. So now I would like to focus your attention for the reasons for this economic crisis. In this point, I would like to go through a brief review of literature. So when we review the existing literature, we can identify specific reasons that caused for this economic crisis that we went through in 2022. So the literature regarding Sri Lanka's financial distress problems is limited, but it gives a starting point for the economic analysis. It is worth starting that problem of the bankruptcy is not the country's fault, but the governments of Sri Lanka. So the main causes were internal conflict, high inflation, the depreciating value of the Sri Lankan rupee, and the shortage of foreign reserves, which made it unable for Sri Lanka's government to pay the debt. Furthermore, the reasons for the economic crisis can be observed based on the literature review. The findings revealed that 71% of the companies in the trading sector were in financial distress in 2010 to 2014, and the rest of the 29% were in the gray zone. So the fact that none of the companies lies under the safe zone highlights as a whole the sector is in menace. So special focus on Sri Lanka's debt history was documented by Somya Bhumik, an associate fellow at the Center for New Economic Diplomacy, Observer Research Foundation. So he proved that Sri Lanka experienced a long-term twin deficit case where the economy's current account moved in the same direction as its fiscal account. So in the case of Sri Lanka, the excess demand increased, imports and inflation making domestic less competitive. Besides that, the crisis in Sri Lanka was the consequence of the mismanagement of the government while implementing ecological agriculture according to the Sustainable Development Framework of Agenda 2030, which made the agriculture products exports down. And Sri Lanka's government was forced to import even rice, which is still one of the main national products in Sri Lanka. And the growing debt of Sri Lanka was also rooted by the involvement in Chinese investment initiatives as well.
So it needs to be stated that Sri Lanka was actively involved in the Belt and Road Initiative owned by the Chinese government, which impacted significantly the collapse of Sri Lanka in an economic sense. However, the literature in this area is rather limited due to political correctness. So there is no direct evidence that China used the weakness of Sri Lanka in corporate governance to get economic control over the country's investment decisions. The financial collapse of Sri Lanka was caused also by the mismanagement of the state and internal conflicts as the results of corruption and the worsening of the standard of living of the citizens as well. Some authors indicated that internal conflicts could be managed by transferring the expenses from the defense sector to improving the standard of living of Sri Lankan citizens as well. The interesting fact is that some experts wrote their recommendations many years ago for Sri Lankan government policy, and those recommendations were not implemented, putting Sri Lanka on the edge of economic problems, specifically with the trade deficit, lower return on investment, and high tariff protection in trade, inflexible labor market, inefficient education, and high inflation, and communication problems between the government and the private sector. So if you look at the ongoing policy reforms now with the Sri Lanka's government deal with, so Sri Lanka's government approached the International Monetary Fund for assistance with the restoring economic stability. 16 IMF finance programs have already been granted to Sri Lanka, and the government is now managing the 17th extended fund facility. The present policy initiatives are all in line with the most recent IMF policy package. The government prioritizes six policy areas: achieving fiscal consolidation and institutional strengthening, ensuring financial stability, eliminating corruption risks, and addressing the sustainability of public debt. So, among these policy areas, debt restructuring and state-owned enterprise reforms have drawn more domestic and foreign attention. So these policy changes have a great deal of potential to speed up the process of economic recovery, but the most factor in the distributive impacts of such policies and ensure the safety nets are in place to protect the most vulnerable groups in the economy. So without this, the Sri Lankan government stands to further exacerbate inequality and cause other structural problems in the long run. Furthermore, the six goals are outlined in the 17th IMF program. The primary goal is to advance the revenue based fiscal consolidation and restructure social safety nets and financial institutions and state owned enterprises. Secondly, it aims to re-establish the valuable the public debt, and the program also aims to restore the price stability by rebuilding external buffers as well. Additionally, the initiative aims to protect against corruption and provide public financial stability. Another broader goal of the program is to raise sustainable economic growth, and debt reduction is a top priority of Sri Lanka's effort to restore the economy. And several policies have been implemented to rebuild external buffers and restore price stability. By the end of 2024, the government hopes to lower headline inflation and stabilize it at a target range of 4 to 6%. So, as a result, the central bank implemented a contractionary monetary policy and increased the policy rates as well. It was intended to restrict government interference in exchange rate policy and to allow the Sri Lankan rupee to adapt to shifting fundamentals as well. For a limited time, the Central Bank of Sri Lanka implemented market advice to keep daily currency rate fluctuations within a specified range. However, given the intricate nature of the debt restructuring process, the harsh external environment, and the difficult political and social climate, there is a very high policy implementation risk. So the program faces high risks of slippages and fiscal consolidation and revenue mobilization and reserve building due to Sri Lanka's poor track record of reform implementation. So implementing policy could be made more difficult
by a deeper crisis brought on by more economic repercussions, a weakening banking sector, and pressure from currency rates, and a decline in market confidence as well. So, will Sri Lanka be benefited from India's G20 presidency? This is the last part that I would like to discuss in my presentation. So, as the president of the G20, India can play a leading role in shaping debates on issues that are increasingly becoming important for development and growth. Economic stability, climate change, the pursuit of sustainable development goals of 2030 agenda, and energy and health security, food, fertilizer, and fuel security are the issues that are more relevant to the South Asian region. So during its G20 presidency, India, as the global leader, can showcase and help other developing nations build on education, trade, technology, and the economy with blended learning and the collaboration. So Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe's visit to India on 21st July 2023 concluded with an ambitious agenda for bilateral connectivity. So the joint statement issued after the meeting clearly emphasized the economic element of the bilateral relationship. So India played a crucial neighborhood first role with foreign aid of $4 billion to Sri Lanka after the island economy defaulted on its foreign debt in April 2022 and slipped into an economic crisis. So this time it is not just a government to government plan between Sri Lanka and India. The partnership should encourage investment from India's private sector and joint ventures with Sri Lankan companies as well. So the three areas, logistics, energy and tourism, are the focus of this. So these three areas should be the focus of the partnership between India and Sri Lanka, considering the needs of the Sri Lankan economy within this time. And this partnership should include improving regional logistics and the development of ports in Colombo, Trincomalee, and Kankasanturi, and ferry service between Indian and Sri Lankan ports, and great air connectivity between both countries as well. So these are business investments that are enable people to people movement as well. And bilateral energy engagement is significant. The most important projects include proposals to build an oil pipeline from India to Sri Lanka and to connect the two countries' electricity grids. So India already has oil pipelines and power links with Bangladesh and Nepal, providing a template that can be used with Sri Lanka too. So while India is an energy importer, it houses a world-class and world-scale oil refining and processing industry as well. So connecting Sri Lanka to the Indian oil grid will provide Sri Lanka with cheaper fuel on account of India's economies of scale. So those are the sectors that Sri Lanka can think to get some assistance and benefits from India and India's G20 presidency as well. So Sri Lanka fuel stages, we observed several short fuel stages in Sri Lankan fuel sector in 2022. So Sri Lanka can address this issue by getting the assistance from India. So these are the points that I would like to highlight in my presentation. So thank you very much for your attention to my presentation. Thank you, Tharindo Udayanga sir, for putting a rigorous research paper before our audience and participants. Basically, sir, you have put your points about Sri Lankan economic crisis. Especially, it was greatly felt during the session 2010 to 2014. You have talked about socio-economic crisis in 2020 also. Fiscal sector imbalances persisted for several decades and impact of prices on vulnerable households. You also talked about credible and transparent policy measures. Sir, you have given the reasons for economic crisis and you have suggested for ongoing policy reforms as you have
told us that 6 goals are outlined in 17 international monetary fund programs. You have told us benefits to Sri Lanka from India through this G20 summit. Basically, 3 points were there: logistics, energy, and tourism. You also have outlined about the oil pipeline from India to Sri Lanka. Sir, you have put many points that we could not note down due to the lack of time, but you have impacted and given different types of points that can be benefited for India as well as for Sri Lanka also. Thank you for your presentation, sir. Thank you for your contribution to our seminar as a panelist. Thank you, sir. Now, बहुत देर से कहते हैं ना दर पे आंखें लगी थी। सर का एक बड़ा पेशेंस हमारे लिए एक आदर्श की भी बात है। हमारे स्पॉन्सर 2 थे इस कार्यक्रम में, लेकिन 2 में से एक ही उपस्थित हो पाए, तो पक्की बात है कम चीजें अधिक आदरणीय होती हैं जी, और अधिक यूजेबल भी होती हैं। तो मैं बिना किसी समय को गंवाए अपने मध्य में मेरे ठीक दाईं ओर आप श्रीमान श्रेयांश सिन्हा जी, आप मैनेजर हैं राइट म्यूचुअल फंड में। मैं सर से आग्रह करूंगा कि 10 मिनट हमें अपने श्री वचनों से लाभान्वित करें, हमारा मार्गदर्शन करेंगे अपनी पॉलिसीज के विषय में। श्रेयांश सर। Good afternoon, friends. Myself Shreyansh Sinha, working as a regional manager in Bajaj Allianz Life Insurance Company, and I'm here with my right choice distribution partners. हम लोगों ने यहाँ पे स्पॉन्सरशिप किया है, और स्पॉन्सरशिप इसलिए किया है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैलेंट्स हैं। और सबसे पहले अपने बातों को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले सारे टीचर्स को प्रणाम करना चाहूँगा कि आज मैं जो भी कुछ हूँ तो उसके पीछे किसी न किसी टीचर्स का ही हाथ है, और हर एक सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी टीचर्स का हाथ जरूर होता है, और इसीलिए हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। तो साल में एक बार केवल धन्यवाद देने से नहीं होगा, हर समय जब भी हम लोग सफल हो, जब भी कुछ हो, तो अपने शिक्षक को, टीचर्स को जरूर मन से उनका सम्मान करें और आदर करें और उनको धन्यवाद दें। मेरा यही मानना है, और मैं आज जो भी कुछ हूँ मेरे पीछे भी टीचर्स का बहुत मेहनत लगा है, तब मैं आज यहाँ पे हूँ। हम लोग जो यहाँ पे एज ए कंपनी जो हम लोगों ने स्पॉन्सरशिप किया है, हम लोग यहाँ पे एक कैंप करना चाहते हैं, जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन जो आप लोग का प्लेसमेंट सेल्स होगा उसमें हम लोग काम करना चाहते हैं कि जो आदमी फाइनेंशियल सेक्टर में काम करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट कॉमर्स के स्टूडेंट है या साइंस के स्टूडेंट है, बट आगे चल के फाइनेंस सेक्टर में अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड सेक्टर में आना चाहते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में आना चाहते हैं, उनको हम लोग कैंपस प्लेसमेंट देंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएंगे तो हमारे साथ हमारे एचआर की टीम भी होगी, और जो यहाँ पे पास आउट कैंडिडेट्स होंगे उनका जिनके अंदर जो टैलेंट्स होगा उनको हम लोग डायरेक्ट वहां से प्लेसमेंट दे सकते हैं, और वो पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं हमारे कंपनी के द्वारा। एक कंपनी का बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 2 कंपनी का जो है वो मर्जर है, बजाज और एलियंज, और राइट चॉइस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारी पार्टनर है। तो बजाज जो है बजाज फिनसर्व की अगर बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उससे ज्यादा लोन इंडियंस को हम लोगों ने बजाज फिनसर्व के थ्रू दिया है। तो आज के दिन में बजाज फिनसर्व है वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, और एलियन जो है वो जर्मनी की कंपनी है जो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। तो जिस तरह से हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहा है और जिस तरह से बैंकिंग में बदलाव आ रहे हैं, तो पहले क्या था कि हमारे पास अगर कुछ पैसा होता हम लोग बैंक में रखते थे और वहां से हमें इंटरेस्ट आता था, पर डे बाय डे जैसे जैसे हमारा कंपनी डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, हालांकि भी बहुत दूर है, उस तरह से पूरे बैंकिंग सेक्टर में चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस क्या आ रहे हैं? पहले हमारा जैसे इंटरेस्ट रेट 8% 10% एफडी पे मिलता था, अभी धीरे धीरे वो इंटरेस्ट रेट घटते जा रहा है। तो हम लोग कस्टमर को बताते हैं कि कहाँ पे आपका पैसा सुरक्षित है। फॉर एग्जांपल अभी अगर 3% 4% 5% सेविंग अकाउंट में हम अपना पैसा रखते हैं तो इनफैक्ट हमारा पैसा बढ़ नहीं रहा है,
इनफैक्ट वो घट रहा है। कैसे? रेट ऑफ इन्फ्लेशन इतना हाई है कि पर ईयर 7 to 8% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है और हमारा इंटरेस्ट रेट 6%, मैक्सिमम 5%, 6% की ओर जा रहा है। और अगर फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं तो उस पर भी मैच्योरिटी पे इंटरेस्ट लग जाता है। तो हम लोग राइट चॉइस डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से ये बताते हैं कि कैसे हम लोग इन्वेस्ट सही जगह करें जो हमारा पैसा ग्रो करे और रेट ऑफ इन्फ्लेशन को मार करके हम लोग आगे बढ़ सके और हमारे पास जमा पूंजी हो। जिस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर चेंज हो रहा है, आने वाले समय में ऐसा भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप जब सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रख रहे हैं तो बैंक उस सेविंग अकाउंट से आपका चार्ज काटेगी। ये आने वाले समय में विद इन 10 इयर्स और 15 इयर्स ये दिखने के लिए मिलेगा। और यूएस वगैरह में ऐसी बैंकिंग है जहां पे आपका पैसा रखते हैं तो सिक्योरिटी के लिए आपसे चार्ज लेती है। जस्ट लाइक जैसे आप लॉकर में अपना सोना रखते हैं तो लॉकर का चार्ज देना होता है, उस हिसाब से सेविंग अकाउंट में भी चार्जेस देना पड़ेगा। तो उस समय के लिए क्या होगा कि जो पैसा हम लोग कमा रहे हैं और जिसको रख रहे हैं उस पर चार्जेस लग रहे हैं। तो अभी भी आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, 10 से 8 हुआ, 8 से 7 को घटते घटते एसबीआई वगैरह सेविंग अकाउंट में 3 से 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। तो सही जगह अगर हम लोग अपने पैसे को लगाएंगे तो वहां से ग्रोथ ज्यादा आएगा। उसमें सही जगह में क्या है, हमारा म्यूचुअल फंड्स है जो हमें एवरेज 20% का रिटर्न देता है अगर 5 इयर्स का टेन्योर लेके चले। लाइफ इंश्योरेंस है जहां मैच्योरिटी पे कोई टैक्स नहीं लगता है और गारंटेड रिटर्न मिलता है, जो बोल दिया वो मिलेगा। आज के दिन में जितने भी जॉब मिल रहे हैं उसमें पेंशन नहीं मिलता है। पेंशन एक सिक्योरिटी था जो हमारे मदर फादर को मिला, हमारे दादाजी लोग को मिला, बट आने वाले जनरेशन और हम लोग को पेंशन नहीं है। तो गवर्नमेंट ने हम लोग जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है उसको अलाउ किया पेंशन प्लान लाने के लिए। तो अभी हमारे पास एक से एक बढ़िया पेंशन प्लान है जहां पे आप कोई आदमी अगर इन्वेस्ट करता है तो जस्ट लाइक एन पेंशन उसको लाइफ टाइम एन्युटी उसको पैसा मिलेगा, उनके बाद उनकी वाइफ को पैसा मिलेगा और उसके बाद जो पैसा पूरा जमा होता है वो बच्चों को मिल जाता है, नॉमिनी को एज ए मैच्योरिटी। तो बहुत तरह के प्लान्स हैं, बहुत सारे प्लान लेकर के हम लोग इस कॉलेज में आए हैं कि यहाँ से भी हमें खूब अच्छा टैलेंट मिलेगा जिसको प्लेसमेंट सेल्स में हम लोग डायरेक्ट जॉब दे पाएंगे, जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे या जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे और अपना फ्यूचर फिनेंशियल सेक्टर में बनाना चाहते हैं उनको हम लोग प्लेसमेंट देंगे और प्लेसमेंट भी बढ़िया देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कम सैलरी वाला प्लेसमेंट देंगे, बढ़िया जिस हिसाब से उनका टैलेंट होगा, जिस हिसाब से हमारा एचआर से उनका इंटरेक्शन होगा उस हिसाब से उनका सैलरी फिक्स होगा और बढ़िया प्लेसमेंट मिलेगा। तो इसके लिए मंजरी मैम को स्पेशली धन्यवाद कि वो हमको एक मौका दिए यहाँ पे आने के लिए और हमारा स्पॉन्सरशिप ली और हम लोग को एक इंटरेक्शन का मौका मिला। तो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू श्रेयांश सर। मुझे पता होता कि आप नौकरी देने वाले हैं तो मैं तो शोर मचा देता। हाँ पक्का। भाई सोचिए, नौकरी का मतलब है आज के समय में अमृत मिल गया है, जीवन दान मिल गया है। तो आप तो बड़ा अच्छा काम ये कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, पैसे की बात सुबह से शाम तक, बाप रे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लोग ध्यान से सुनते हैं। हाँ हम तो मैथमेटिक्स वाले, हमारा ब्लैक एंड व्हाइट कोई सुनने को तैयार नहीं, तो पैसे की बात सब सुनते हैं। तो सर ने बड़ी अच्छी बातें हमें शेयर की हैं और मैंने कुछ थोड़ा सा 2-3 बातें नोट की हैं। तो कोशिश करेंगे सर, जैसा आपने सजेस्ट किया है अपने कॉलेज में, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में तो प्लेसमेंट सेल है। हम टीचर्स जहाँ से भी डिमांड आती है तो सप्लाई करते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, लेकिन इसका दायरा बढ़ा करके हम आपके सेक्टर में भी लाना चाहेंगे। और आपने सर कुछ टैलेंट्स की बात कही है तो पक्की बात है हमारे डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं, एक्सपर्ट लेक्चर्स हैं, वो अपने अपने विद्यार्थियों के बीच में इस मैसेज को रखेंगे। क्योंकि आप फुल टाइम भी और पार्ट टाइम भी, तो सर कोशिश कीजिएगा मेरे लिए पार्ट टाइम जो, क्योंकि मेरी सेहत बहुत डाउन हो गई है और पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो पक्की बात है मैं भी आपकी तरह से ही, ठीक है ना, हाँ बढ़िया सेहत वाला हो जाऊंगा। थैंक यू सर फॉर योर मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन। अब थोड़ा सा इंतजार हो रहा होगा, ऑनलाइन हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑडियंस हैं, तो मैं आगे के सेशन के लिए, चूंकि टेक्निकल सेशन दूसरा शुरू होगा अब हमारा, जिसमें
पार्टिसिपेंट्स हैं अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे। मैं समझता हूँ लगभग 3 मिनट में वो अपने फाइंडिंग्स को हमारे समक्ष रखने की कोशिश करेंगे, ताकि सभी पार्टिसिपेंट्स को हम इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रेजेंटेशन दे सकें। तो मैं आगे के कार्यक्रम में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मैडम मंजरी नाथ जी और डॉक्टर विनीता भारद्वाज जी को आमंत्रित करता हूं कि आकर के वो अपने अगले सेशन को देखें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बसंत सर, आपने बहुत ज़्यादा मदद की हमारी। थैंक यू सो मच। वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड। अब मैं टेक्निकल सेशन शुरुआत करना चाहूँगी और सभी प्रेजेंटर रेडी हैं ऑनलाइन। पहला नाम है हमारा डॉक्टर निधि सिन्हा, रामकृष्ण द्वारका कॉलेज, पटना। निधि? या गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। प्लीज शेयर करें। जी जी, आप कर सकते हैं। Good afternoon, everyone. I am Dr. Nidhi Sinha from Patliputra University, and the topic of my paper presentation is Bridging the Gap, Empowering First-Generation Learners in Patna. First-generation learners are those who are the first in their family to attend school and have illiterate parents. Their lives initially resemble typical school children, but their distinctness arise from their identity, socioeconomic background, and specific challenges. These issues include poor performance, lack of preparedness and guidance, limited family support, resource scarcity, early dropout rates, extended work hours, and reduced social and structural integration. The two objectives of the study are to study barriers that hinder the academic progress of first-generation learners and to examine various initiatives and strategies for empowering first-generation learners in Patna. Data for this study is drawn from both primary as well as secondary sources. Primary data was collected through field survey during 2016 to 2018. 300 first-generation households with 724 first-generation learners were selected for primary survey. For getting an overview of the state, secondary data is used. Secondary data has been used for selecting block, villages, and towns. NSS round, 64th and 75th round, unit level data is used for the secondary data. First, pilot survey was done based on pilot survey questionnaire with open-ended multiple choice questions were framed, which were qualitative in nature. Thus, first government schools were identified. From their areas with first-generation learners, concentration were identified. Focus group discussion with ASHA workers and self-help groups greatly helped in identifying them. The study includes households with currently attending first-generation learner irrespective of age. It includes such first-generation learners who are studying, including learners from school as well as college. Stratified purposive snowball sampling is used for identifying the first-generation learners in Patna face academic challenges primarily of socioeconomic nature. Many come from disadvantaged backgrounds with financial constraints limiting resource access, with most belonging to the poorest category. In rural areas, first-generation learners, especially females, undertake extensive household work, while males handle farm work and other responsibilities. These extra workload, particularly in rural regions, can result in academic burnout, decreased performance, and early dropout. Key reasons for withdrawal include financial constraints, lack of interest, academic struggle, employment, marriage, and distance from educational institution. Notably, none of the female pursue science courses at higher educational levels due to the high tuition costs associated with science program. Empowering first-generation learners, Bihar lacks a specific policy for first-generation learners, but offer indirect benefits, including free education, books, uniform, midday meal program, cycle for higher secondary access, and financial support through fellowship and various educational levels. Bridging the gap, first-generation learners in Bihar face educational challenges like teacher neglect, peer discrimination, parental disengagement, and social isolation, causing academic lag. Building social capital through positive interaction with peer and teachers is crucial, notably social connection mainly with lower ranking staff like medical shop owners, tutors, and clerks is found. Additionally, this connection often align with caste, with only 9 households having all 3 types of ties.
To empower first generation learner, focus should be put on addressing socio-economic challenges, providing psychological support and mentorship, ensuring inclusive education, enhancing the quality and quality of teachers in government schools and colleges, organizing skill development programs, offering free tutorials, conducting counseling session in school and colleges to reduce dropout rates due to disinterest. Thank you. My presentation is over. Thank you. थैंक यू सो मच निधि, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, आपने बहुत अच्छी तैयारी की थी। हमारी नेक्स्ट प्रेजेंटर है रागिनी कुमारी फ्रॉम बिहार यूनिवर्सिटी। रागिनी, आर यू देयर? हेलो, hello, namaskar to all, respected chairperson, chief guest, representative to all of you. Myself, Ragini, research scholar from University Department of Economics, Baba Bhimrao Ambedkar University, Muzaffarpur. My topic is the role of the women in development G20. At first, I want to start with the sloka, Balika no yug janit Balika, Naham Badrubala Adi Sakti Ambala. Recently, as a part of the India G20 presidency, the Women 20 summit with the theme Women Led Development, transformed the theme and the transit and held in the Mahabalipuram, Tamil Nadu. At the summit, at aim to celebrate the power of women empowerment and the address key issues that related to economics, empowerment, trade and the investment and the care economics. The key of the highlighted of the Women 2020, Women G20. First, discussion of the wrapping of the individual's barriers and the basis that the present women form the researching higher position and the leadership role in the various fields where the hill and the government initiatives such as the self-help groups, PM Mudra schemes and government e-market project which allow women access to market and the finance are the highlighted. Gender disparities in economics, participants are the highlighted as women often face the inequality in the ascending economic opportunities, including the financial resources, market, and the trade network. Participants have the discussed mathematics and the barriers such as the lack of the access, credit, and limited properties right, and the discriminatory practice which have the attended women economic empowerment. Celebration of the strength, resiliency, and the progress in women empowerment was the business about the Women G20s. Women 20 is the official agreement group under the G20. It was the established in the 2015 with the aim of the facing on the gender equality and the women empowerment. First, Women G20 summit was held in Durban, Turkey's G20's presidency in the 2015. The group seeks of the maintains genders and the consideration into the G20 discussion and the translate theme into the policies and the commitments. It influence G20's agenda and the promote gender sensitive opportunities, various global challenges and priorities. Women entrepreneurships, grassroots women leaderships, bringing as the gender digital divided education and and skill development, climate change, and the compositions, Women G20 compromise as the traditional network of the delegates. Delegates respect non-government women, organizations, civil society, female, entrepreneur, business, and the tank. The network expands across G20 member. Let's start.
At the last, the conclusion and observation of our country in myself, women should be financial independent. It does not matter who your father is, does not matter who your husband is going to be, does not matter who your brother is, does not matter who is the man is you like. You need to be the responsible for your financial and to be the financial independent. Most important for the humans, financial independence gives you the ability to the protect yourself when the life happens to stand on your own feet and say, alright, I can do something about it without being helpless. So thank you so much. Next participant is Vijay Chaudhary. Vijay Shankar Chaudhary, please come. सम्मानित मंच, मेरा सदर प्रणाम प्रोफेसर बीके वाजपेयी सर, जो मेरे गुरुतुल हैं और अर्थशास्त्र के प्रख्यात विद्वान, जाने माने विद्वान हैं, उनको मेरा सदर प्रणाम। प्रिंसिपल सर एंड डियर रिस्पेक्टेड सर एंड ऑर्डिनेंस, मैं विजय शंकर चौधरी, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी। G20 summit का जो इस परिवार की तरह जो है वस्तुओं कुटुंबकम के करके वन अर्थ वन फैमिली को लेकर के आगे बढ़ना है। आज G20 में देखते हैं कि 20 देश शामिल हैं, जिसमें खासकर जो है जो इसका ये था कि निर्माण इसीलिए किया गया था कि इसमें आर्थिक राजनीतिक जो मुद्दे हैं, खासकर डेवलपमेंट कंट्री के और इन डेवलपमेंट कंट्री के और जो विकसित अविकसित एंड विकसित कंट्री का के जो एक साझा मंच शेयर किया था, जिसमें उसका एक उद्देश्य था कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, आपदा, तमाम चीज, आतंकवाद, ये सब कुछ सारे मुद्दे को लेकर जो है खासकर भारत का जो है एक इससे पहले पूर्व में इंडोनेशिया में सम्मेलन किया था। इस बार जो है भारत का नेतृत्व हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो है ब्राजील का नेतृत्व करेगा। और खासकर जो है इन्होंने खासकर जो इकोनॉमिक्स दृष्टि से हम देखें तो G20 में सम्मेलन में उतना खास आर्थिक रूप से हुआ है, लेकिन कुछ मैं उसमें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे पहले तक इंटरनेशनल जो है ट्रेड का मामला था। इंटरनेशनल ट्रेड भारत में जो विकसित देश है, जिसमें उसका जो है आयात निर्यात जो सुलभ व्यापार है, जो सही तरीके से हो सके और सुचारू रूप से हो सके, और जो जटिलताएं हैं इस कदम में जो है व्यापार करने के लिए, उसको सुगमता को दूर करने के लिए एक अथक प्रयास था। भारत ने इसके पुरजोर जो है अपनी आवाज उन्होंने उठाया। अब बात रखिए। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक है, जिसमें वर्ल्ड बैंक आता है, IMF आ जाता है, IFM है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। जो इसका ये था कि खासकर विकासशील देश जो हैं और के जो आयात निर्यात में खासकर उसके जो लोन चाहे कर्ज जो सामान्य जो उसको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में खदान के लिए जो है उसको लेना है, उसका ये डिमांड था कि उसको जो है विकासशील देश के लिए जो है एक सुलभ किया जाए, और उसके जो है जितनी भी जो जटिलता है, कम्प्लीटेड है, ब्यूरोक्रेसी है, तो उसमें सस्ती दर में दी जाए, किसी प्रकार का उसमें पाबंदी नहीं किया जाए, जिससे अपना जो विकासशील देश है अपना आर्थिक रूप से अपना डेवलपमेंट कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट का था।
है जो जो G20 के माध्यम से जो है जो उसकी बात एक जोर तरीके से रखा, जिसमें इंटर इसमें आ जाता है इंटर ट्रेड डेवलपमेंट में है, खाद्यान्न है, ऑयल है, दवाइयाँ है, मेडिसिन है, अस्थायी भुगतान कर दिया गया। और जो कुछ देश जो विकसित देश जैसे खासकर काल में जब भी विपदा होती है, जैसे आप कोरोना काल में आप देख सकते हैं, जब कोविड काल में जब हुआ था कि जो पूरे जो है वेंटिलेटर का है, सैनिटाइजर का मामला है, उसके बाद जो है मास्क का जरूरत है, तो हमने भारत ने कई देशों को जो डेवलप किया, और कुछ लोग ने जो पहले से ऑलरेडी तैयार कर रहे होते हैं, तो उसके साथ क्या करते हैं, विकासशील देशों के साथ जो है आर्थिक बोझ कर देते हैं और अपना डिमांड कर देते हैं, बार्गेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, खरीद फरोख्त कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपको जो है विकासशील देश को जो है मजबूरी में उसको जनता के उसको पीपल को बचाने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए लेना पड़ता है, एहतियात करना पड़ता है, जो सह नहीं पाते हैं। तो उसका ये था कि जो आपदा काल में जो चीजें हैं, तो उसने विकसित देशों से आह्वान किया कि आप जो है सो मतलब खासकर जो विकासशील देश है उसका मुनाफा ना कमाए, ना ही उसका मुनाफा कमाए, ना ही उसका जो है कर्ज ले, और जो है जो रियायती दर है उसमें जो है करके जो है दिया जाए। फिर सबसे बड़ी G20 में एक हम देखने को मुझे मिलता है कि जो रशियन और यूक्रेन का जो मामला है, जिससे कारण जो आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है विश्व पटल पर जो है ठप हो गई थी। जैसे आप देख रहे हैं उसमें जो थे कि जैसे खाद है, गेहूं है, चावल है, अनाज है, राशन है, ऑयल का दाम जो है उसी समय हम देखते हैं जब भारत में ही मुझे याद है कि 89-90 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल मिलता था। जब वो वार हुआ तो अभी आज के समय में 109-10 रुपये लमसम के हर स्टेट का अलग अलग है, मतलब मिल जा रहा है। इसके कारण क्या हो गया कि वार से जो है एक विश्व शांति का खतरा उत्पन्न है। मोदी जी ने आह्वान किया था कि आपका युद्ध जो है युद्ध के लिए नहीं है, शांति का युद्ध है, और जो रशिया यूक्रेन का जो पॉलिटिक्स जो वजह से जो पूरे जो है विश्व स्तर पर जो है आर्थिक प्रभाव हुआ, जिसके कारण जो है कई दामों में वृद्धि हुई, और जो है खासकर विकासशील और देशों में जो है विकसित देश बार्गेनिंग करना स्टार्ट हो गया, इसके कारण जो है आर्थिक बोझ जो है उन पर आ गया था। और जलवायु, नेक्स्ट अंतिम पॉइंट में कहना चाहता हूँ कि जलवायु परिवर्तन इस पर जो है G20 में काफी सुचारू रूप से रखा गया था, जिसमें था कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो वाजपेयी साहब ने बहुत विस्तार से उन्होंने उस पर प्रकाश डाला है, तो लेकिन यह है कि जो आपदाएं हैं, जैसे सुनामी लहर है, गौरव है, स्नन फ्लू है, तमाम तरह की जो है जो प्रकृति के जो है असमानताएं जो हम लोग जो है विकसित देश जो है ऑलरेडी कर चुका है, विकासशील देश पर जो है बोझ लाते हैं कि आपने पहले से ऑलरेडी डेवलपमेंट कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लिया, कल कारखाने आपने लगा लिया, लेकिन विकासशील देश से उनका कहना है कि आपने पूरे जो नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन आपने किया है, लेकिन पर्यावरण जो है दूषित होने का आरोप मुझ पे आप लगाते हो, है ना, करना होता है। इसका जो है बोला कि आप हमको जो है हमको भी डेवलप करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर करने का, उद्योग धंधे खोलने का मुझे आप ऋण दे और कर्ज दे, और जिससे मैं अपना डेवलपमेंट कर सके, और इस पर जो है पर्यावरण तक वैसी चिंता है। जब मैं पर्यावरण को जब देख रहा था, जलवायु परिवर्तन था, एक आप लोगों के नाम सुने होंगे, एक कुहन नाम का एक दार्शनिक जो दार्शनिक खासकर इंग्लैंड के थे, उसने एक पुस्तक निकाला साइलेंट स्प्रिंग ऐसी पुस्तक थी जिसने पर्यावरण पर जो है पर्यावरण के जो है जो जितने जो घटक हुए हैं, चाहे पर्यावरण के कारण पर मानव और प्रकृति का जो नाश हुआ है, उसने फेमस किताब थी, और उसमें कहा जाता है तो किताब इतनी लिखी जो है, मतलब रेडियो स्टेशन, हवाई अड्डा स्टेशन पर जो एक फेमस किताब थी, जिसमें उसने कुहन ने लिखा कि साइलेंट स्प्रिंग एक नाम से है कि हम ऐसा विश्व समाज में हम रह रहे हैं जिसपे हम देखेंगे मनुष्य रहेगा, पशु पक्षी तोता मैना सुगा की हम आवाज सुनना बंद हो जाएगा। हम जो है मानव को देखे सुबह उठेंगे, ना मुझे कोयल की आवाज आएगी, ना तोते की आवाज आएगी, ना किसी पक्षी का होगा, लेकिन ऐसा संसार होगा जिसमें आदमी को देखेगा, पशु पक्षी का अभाव हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जिसमें हम उस संसार की ओर जा रहे हैं, क्योंकि इसमें खनिज पदार्थ जो हमने जो साइंटिफिक ढंग से हमने किया, जिस कारण जो है खासकर मोबाइल के टावर के माध्यम से कितने पशु पक्षी जीव जो है नष्ट हो गया था। उस पर एक चिंता का वैश्विक और जो उन्होंने चिंता दिखाया, और उसने और एक राजनेताओं को उसने जो है पर्यावरण को संरक्षण करने पर उन्होंने बल दिया। और खासकर जो G20 का मैं जब देख रहा था तो मैं कुछ आजकल के समय में तो आलोचना करना तो अपराध है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट में देखा मैं जो देखा एक पॉलिटिकल साइंस की, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, क्योंकि अर्थ में ज्यादा मेरी कमांड है भी नहीं,
और तो मैं देखता हूँ कि G20 2-3 मुख्य बात कर मैं बात करता हूँ। एक पॉइंट ये है कि G20 का सम्मेलन हुआ, जो भारत दावा करता है कि मैं नेतृत्व किया, विश्व गुरु हुआ, स्ट्रॉन्ग पावर, ऑर्गेनाइज्ड पावर जो है मुकाबला होता है। लेकिन ये मेरा कहना है कि 17वां बार जो है भारत की G20 की अध्यक्षता में, इससे पहले कई बार भारत ने ट्राई कर चुका था लेकिन नहीं मिला था। इससे पहले इंडोनेशिया था, फिर भारत का हुआ, फिर उसके ब्राजील का हुआ, एक एक मामला है। दूसरी बात, इससे पहले G20 के सम्मेलन में जो है पॉलिटिकल विजन देखे तो इससे पहले वित्त मंत्री करते थे, वित्त मंत्री के माध्यम से होता था। इस बार जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है अध्यक्ष के माध्यम से किया गया। और योगेंद्र यादव जैसा यादव लिखते हैं कि जिस देश में 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिस देश में 50 करोड़ लोग जो है जहां अनाज खाने के लिए व्याप्त हैं, गरीबी है, भुखमरी है, शिक्षा है ना, कुपोषण का है, उस देश में 2 रुपये 3 रुपये चावल आप बांटते हो, उस देश में आपने जो है 14,000 या जो अभी आंकड़ा में पूरा स्पष्ट नहीं हुआ है कितना करोड़ रुपया से आपने खर्च किया। इससे पहले चाइना में हुआ था खर्च, लेकिन उस अलग जगह से भारत ने किया। पूरे मेहमानों को जितने जो राजदूत को बुला करके आपने सोने के बर्तन में चम्मच में आप खाना खिलाया, गौतम कुटुंब की बात की, और ने 3 दिनों तक आपने दिल्ली बंद कर दिया, जिसके कारण जो अर्थव्यवस्था जो है काफी प्रभावित हुई, है ना। नेक्स्ट बात है, लॉकडाउन हो गया था सर, है ना। और एक बार जो सर अमेरिकन प्रेसिडेंट भी आए थे गुजरात में, तो दीवारें, बड़ी बड़ी दीवारें कर दी गई थी। अब क्या आप शो करना चाहते हैं? ये करना चाहते हैं कि एक तरफ तो जो है 20 रुपया ही है, मतलब हम लोग जो है 2 रुपये 3 रुपये अनाज दे रहे हैं, आप जो मजदूरी आय जो है आपके पास जो है आप रोजगार गारंटी में 100 रुपये 150 रुपये आप देते हो, आप करोड़ रुपये आप खर्च कर रहे हैं गवाही करने के लिए। ठीक है, ठीक चीज होना चाहिए, लेकिन जी अपनी जितनी आपकी क्षमता है, व्यवस्था है, उतना करना चाहिए। लास्ट में क्या मैम, नेक्स्ट पॉइंट ये करना चाहता हूँ कि ये G20 का जो सम्मेलन है वो जो है मतलब पूरा राष्ट्राध्यक्ष पे हुआ है। सफल इसीलिए हुआ है कि हमने रसिया यूक्रेन की बात हमने नहीं की, चाइना की बात हमने नहीं उठाई। यदि पिछले बार जो हुआ था उस पर आपने उठाया, चाइना पे बात उठाया, रसिया को उठाया, तो आप जो है असहमति लोगों ने दिया, लेकिन आपने किसी उस पर बात पर छेड़ा ही नहीं, रशियन यूक्रेन की बात आपने किया ही नहीं, तो आप सफल हो सका। और जितने भी सम्मेलन के जितने भी आए थे, पाकिस्तान जैसे मैडम ने बताई थी, चाइना और कई देश नहीं आए, तो हमने एक ये G20 सम्मेलन जो घोषणा पत्र है वो मानने के लिए कोई राष्ट्राध्यक्ष बाध्य नहीं है। जब बाध्य नहीं होगा तो उसका क्या रहेगा, बाध्य नहीं है। इतना ही बात कर करके हम अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सभी से आग्रह है कि समय का ध्यान रखें। आप लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और सुनने का भी मन बहुत कर रहा है, लेकिन हमारे पास समय की पाबंदी है, इसलिए 2 से 3 मिनट का ध्यान रखें। मैडम रीना मैम आप हैं जुड़ी हुई? रीना मैम? Yes, hello ma'am. Good afternoon. Most welcome ma'am. Most welcome. Good afternoon everyone. Just a minute, I am sharing my PPT. My topic of presentation is assessing linkages between agriculture and malnutrition in Uttar Pradesh, India. The overview of my presentation is basically this paper has 3 objectives. First is examining the relationship between agriculture and nutrition in Uttar Pradesh. Second is effect of agriculture income on reducing malnutrition. I have looked at this objective using regression analysis. And third is highlight the policy implication. Based on literature, we have seen that there is a strong relationship between agriculture and malnutrition. We can see that poor quality of nutritional status can increase the risk of child illness, retardation in physical and mental development, ability to work, loss of productivity and efficiencies, and other problems which are highlighted by World Bank, Grantham, Tarojim and Maharajan and Walker. Except it, there are many factors like agriculture is one of the important factors which is critical in malnutrition. Inadequate diet and due to poor access to food, mother's education uh, and
we can see that global malnutrition report also highlighted that unequal nutrition outcome are found in the daily living condition of people, including access to water, sanitation, hygiene, education, healthcare, and household food security. See, my work is based on Uttar Pradesh. So here we can see that changing structure of workforce. Uh, in this PPT, we can see that the workforce participation has increased in has changed in both India and Uttar Pradesh. We can see that the share of cultivators in total workforce has increased in India and Uttar Pradesh both, and the share of agriculture laborers has declined in both India and Uttar Pradesh both. All India agriculture growth is given in this PPT. We can see that agriculture growth in Uttar Pradesh is 4.67%, which is much lower than all India level growth in agriculture. Uh, However, it is still far better than other states. We can see that the growth rate of agriculture is negative in Kerala, that is minus 5.37%. So, agriculture in this state is performing well, but when we compare to other states, there is opportunity to increase in agriculture growth. Now, look at the sources of agriculture growth in Uttar Pradesh. Uh, Here we can see that livestock play an important role in agriculture growth and share major portion in total agriculture growth. Another important share is shared by sugarcane, and third is by fruits and vegetables. We can see that the share of cereals has declined from Tranium year 2013-14 to Tranium year 2018-19, which was from 24.9% to 22.1%. Now look at the agriculture as a source of income. How agriculture is playing a critical role in critical share in total income. We can see that this data is taken from National Sample Survey Organization. First portion of this figure is showing that net receipt from cultivation and farming of animals. We can see that the share of this section is majorly shared by Uttar Pradesh and higher than all India level. The income which is received from non-farm business is lower in Uttar Pradesh in comparison to all India level, and further income from wages is again shared by all India level in comparison to Uttar Pradesh, except for the year 2015 and 16. Now look at the progress in nutritional indicator from NFHS 4 to NFHS 5. We can see that we have taken several indicators for measuring malnutrition at both India and Uttar Pradesh. Uh, I have highlighted in black men whose BMI is below normal has declined in both India and Uttar Pradesh. Women who are overweight or obese has also increased in both India and all Uttar Pradesh. Men who are overweight or obese, it has again increased at both India and all Uttar Pradesh. Children aged 6 to 59 months who are anemic, it has increased both in India and Uttar Pradesh. All women aged 15 to 49 years who are anemic, it has also increased. For Uttar Pradesh, it has declined. Men and aged 15 to 49 years who are anemic, it has increased in India, but it has declined in Uttar Pradesh. Now there is a pathway between agriculture and malnutrition, which show the linkages between agriculture and malnutrition. We can see that policy-driven growth in cereal yields, which also affected uh, household income and food security. Now it deals with quality of child diets, quality of maternal diet,
Now, this is related to child nutrition, height for age, we can see the stunted wasted, and other drivers of nutrition is associated with child nutrition. Those are non-rice incomes, health, education, WASH, family planning, women's empowerment, and climate. Next objective of this paper is to look at the drivers of malnutrition in Uttar Pradesh. To measure this objective, I have used regression analysis, and here we can see that I have highlighted many indicators as a independent and dependent variables are mentioned here. I have taken independent variable malnutrition as dependent variable, and dependence variable are female literacy rate, breastfeeded 1 hour, household with toilet facility, fuel used for cooking, institutional delivery, women's anemia, PNC which is available for 48 hours after delivery, full antenatal care, and this variable is GVA, that means gross value income from agriculture to gross cultivated from agriculture, and last is TFR. So I have run this equation regression for both NCMI as a dependent variable. NCMI is normalized child malnutrition index, and second is IMR, that is infant mortality rate. We can see that many variables which are affecting NCMI are like female literacy rate, breastfeeded, household toilet facility, institutional delivery, women with anemia, PNC, full vaccination, and GVA. All variables are playing an important role in model 1. Another model is in this model, I have not taken female literacy rate and PNC as a variable. See, just I am summarizing that this model shows that these variables are important, which are playing an important role in malnutrition. Now look at the policy implication. This is just three policy implications are just proper implementation of ICDS program. Second is government donors and private players. I mean, private players and NGOs should have play an important role in reducing malnutrition. And holistic approach that incorporate preventive measures such as hygiene promotion, clear water, prevention of perinatal micronutrients, and the promotion of age-appropriate food and feeding practices should be implemented to reduce malnutrition in these states. Thank you very much. Thank you, ma'am. Next participant is Surabhi Rashmi. Please come on the stage. हेलो हेलो मेरा नाम सुमति रस्ती, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से आप सबको मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक है भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का महत्व। G20 शिखर सम्मेलन में वन फ्यूचर सत्र में मोदी जी ने कहा था कि दुनिया के अच्छे भविष्य के लिए वैश्विक निकायों को आज की ध्यान में रखना जरूरी होगा। G20 शिखर सम्मेलन में पिछले वर्ष मोदी को भारत और मोदी जी की सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। द ट्रिब्यून में बताया गया था कि पहली बार G20 शिखर सम्मेलन पश्चिमी देशों का दबदबा नहीं दिखा, ये अपने अर्थव्यवस्था वाले देशों को उपलब्धि कही जाएगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पीएम मोदी को बताया था कि कश्मीर में बहुत कुछ हो रहा है और व्यापार उन्होंने मुक्त व्यापार समझौतों पर दोनों की बातचीत हुई थी। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि हम लोग को अपने हमने महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। वो माँ, बहन और बेटी के रूप में होती है, उनके घर के काम को कोई महत्व नहीं देता। एक सैनिक मोर्चे पे 24 आवर ड्यूटी देता है, उसी तरह से महिलाएं भी घर में 24 घंटे ड्यूटी देती हैं, तो उनके महत्व को समझे। इसी के साथ में अपना कथन समाप्त करती हूँ।
Thank you, Surabhi. Next participant is Muhammad Masroor Alam. Muhammad Masroor Alam. मोहम्मद मसरूर आलम, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? Hello, ma'am. This my Masroor Alam is. See, ma'am. Okay. Ankita P. Nabyada. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. मैम प्लीज आप 2 से 3 मिनट में आप अपनी बात रखें. Yes, sir. Hello, I'm Mithila from Vinamar South Gujarat University, Gujarat. My topic is India's G20 presidency role and important introduction to the G20. The G20 is international forum for the government of 20 major economies. The G20 was established on 26 September 1999 to discuss and resolve issues related international economic cooperation and development policy. The Bloc 20 countries account for about 20 85% of the world GDP, 23 of its population. The members of G20 countries are Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Japan, Russia, Mexico, Saudi Arabia, South Africa, UK, USA, include the European Union. The group of 20 countries represent about 75% of world total greenhouse gas emission. In 2021, the group agreed to limit global warming 1.5% above per industrial level. Why the need G20? Across economic, social, or geographical problems created in the one country of the world can affect other countries as well. England in the year 2008. The economic reason is the America took most of the countries of the world in the grip of recession. India also experienced its the objective of G20. The main objective of G20 are followed. First, policy coordination among its the members to the achieve global economic stability, promoting financial regulation, the reduce risk and the prevent future financial crisis. Mod- modi- International financial framework monetization and new world group risk reduced will be formed by the G20 under chairmanship of India. G20
का उद्देश्य यही है कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत विकास के लिए सदस्य देशों के बीच नीतियों का हेलो और तालमेल स्थापित करना। अंकिता, अंकिता प्लीज, वी हैव नो मोर टाइम, so प्लीज। क्या आप मेरी बात सुन रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही ये बस आप थोड़ा शॉर्ट करें इसे, अब काफी लंबा हो रहा है और भी पार्टिसिपेंट्स वेट कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज सपना चौधरी। सपना चौधरी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट एन कॉलेज पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, सपना चौधरी। Excuse me, ma'am. Ma'am. Hello. हेलो मैम, आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो सपना चौधरी। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज नीरज कुमार। दोनों का नाम एक साथ होगा। हाँ, नीरज कुमार, मोहम्मद अफसर आलम। हेलो मैम। मोहम्मद अफसर आलम। Hello ma'am, am I audible? I am Neeraj Kumar. Am I audible? नीरज कुमार। Hello ma'am. ओके। I am Neeraj Kumar. Am I audible ma'am? क्या मुझे सुन पा रही हैं मैम? शॉर्ट टाइम में थोड़ा जल्दी से, जो 2-3 मिनट में आप जो समझा पाए अपने थॉट को, ठीक है? Okay. Good morning to all of you. I shall keep my discussion within 3 minutes because there is a limitation of time. So the topic of my paper is impact of exchange rate volatility on India's export on Asian countries. This is a combined paper written by me and my colleague Dr. Mohammad Afsar Alam. We both are in the Department of Economics, CM College, Darbhanga. So basically in this paper, we have taken about the idea that in which and how much direction this exchange rate fluctuations can affect the India's trade, because due to the fluctuations, our exports sometimes become cheaper and sometimes becomes costlier, and therefore in long run it may affect our trade volumes. So in this paper we have taken about the ASEAN countries. So the major countries are Cambodia, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, and Philippines. So objective of this paper is to discuss the impact of exchange rate. Especially we have taken the India's export only. We have not taken the import also. So our study is focused on export only. So if we look at the current development in the movement of exchange rate, it is evident, it is clear that this has been increasing continuously. So that's why we thought that this continuous increase has any significant impact on India's trade or not. That's why we have taken this topic. Another aspect of this paper is India's trade with ASEAN countries. Therefore, we have searched too much literature. Then we found that India's Asian trade, particularly in the context of free trade agreement, it means till now we got the literature only on the free trade agreement, not exchange rate volatility. That's why we have taken this topic. Both ex-ante and ex-post research on impact of ASEAN-India free trade agreement were taken upon. However, research has not been taken up in the context of exchange rate with respect to India's trade with ASEAN countries. Therefore, we find a lack of research on the relationship of exchange rate and India's trade with ASEAN countries.
Therefore, the current paper fills this gap. Now, directly I am coming on the findings of the paper. The major finding of this paper is, in this study, for this study, we have adopted gravity model. So due to the lack of time, we are not able to explain this gravity model. And I am also not very much efficient with this gravity model. This entire work is done by the entire research methodology work is done by my colleague, Dr. Muhammad Absar Alam. So we are not going to discuss gravity model. So directly coming on the outcome of the paper, this paper says that we are just focusing only on the fluctuations in exchange rate. But in this paper, we concluded that tariff fluctuations is more important than exchange rate fluctuations. It means the ups and downs in tariff rate, tariff deductions is more important than fluctuation in exchange rate. So the major finding of this paper is, we concluded that tariff is the significant barrier. Tariff plays significant role in India's trade to ASEAN countries rather than exchange rate. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Next participant is Priyanka Singh. Next participant is Priyanka Singh. प्रियंका सिंह, आप मुझे सुन रही हैं? प्रियंका सिंह, दिव्या चंद्रा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I am present. ओके मैम, ये प्लीज 2 से 3 मिनट में आप अपनी बात रखें प्लीज. ठीक है मैम, ठीक है. Good afternoon, everyone. My name is Divya Chandra, and I am research scholar from Patory University, and my topic is India's convening of G20 and opportunities to alleviate poverty. Start from introduction. G20 or Group of 20 is an international forum containing 19 supreme countries and the European Union. The global economic crisis of year 1999 encouraged many developed economies to think of the creating an economic organization that could provide economic strength to them. Concept of G20 has been accepted with the aim of bringing stability in the economic condition of developed and developing nations. The current G20 summit is being hosted by India and is full of opportunities to alleviate poverty. And my paper is based on secondary data and secondary source. Now the review of literature. For the first time in the history of the G20, India, an emerging power representing 1.30 billion people with a democratic polity, will host the summit from 1st December 2022 and convene the G20 leaders summit in 2023. This symbolizes that the focus of international development cooperation has shifted towards the global south, illustrating the growing influence of emerging economies such as India in promoting multilateralism and directing international development cooperation. Now, next to the concept and history of G20, the G20 is a group of 19 countries and the European Union, which was established in the year 1999 as a plan of action for central bank governors and finance ministers to talk about financial
and economic issues. The G20 countries cover almost two-thirds of the world's overall population and 75% of international trade. The group of 20 plays a significant role in shaping and build up the world economy. Now the next is aim and objectives of G20 Summit 2023. First aim is international financial stability. Second is sustainable growth. Third is lifestyle for environment. Fourth is fight against economic crime and international amelioration. Fifth is skill mapping. Sixth is global food security. Seventh is digital public infrastructure and industrial conversion. And the last one is women empowerment. Now the next subtopic is G20 Summit 2023 and opportunities to alleviate poverty. G20 Summit 2023 is hosted by India in New Delhi from 9th September to 10th September. The theme of India's presidency is One Earth, One Family, One Future, or Vasudhaiv Kutumbakam, which means the whole world is one family, and it also shows the global unity. Mr. Amitabh Kant is the Sherpa of India in G20 Summit 2023. India is a developing nation which has issues like poverty, unemployment, sustainable development, women empowerment, etc., which are yet to be resolved completely. If the objectives of G20 fulfilled, then the amount of investment will rise in global economy and more opportunities will create in economy. Hence, in this way, income level of people will increase and it will give some more opportunities to alleviate poverty. With the success of G20, the economic problems facing by the nation can be solved easily, and under this, the amount of poverty will also reduce. Now, the conclusion part. The G20 is a global organization created with the aim of achieving economic stability. At present, along with the basic goal of economic stability, the target has also been set to achieve environmental development, digitalization, increase in yes, ma'am. Yes, ma'am. Employment opportunities, global food security, digital health solution, sustainable tourism, and women empowerment. By convening the G20 Summit 2023, India has set a milestone in the history of G20. Okay, this is the paper. Thank you, ma'am. Thank you. Rajneesh Kumar, next participant is Rajneesh Kumar. Rajneesh Kumar. Rajneesh Kumar, Department of Economics, BKS University, Ara. Next participant is Sonali Singh, Patliputra University. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon to all the dignitaries. I'm Sonali Singh, research scholar, Department of Political Science, Patliputra University, Patna. And the topic of my paper is Women-led Development, India's Vision. Gender, which was a neglected subject, has slowly gained traction in the G20. Women-led development has been listed as one of the 6 main priorities of its G20 presidency. With India assuming the presidency, the focus tends to shift from women's development to women-led development. India's vision of women-led development is centered across the idea that when women prosper, the world prospers. Women is the bedrock of our society's development, and their leadership is crucial for our inclusive and sustainable progress. A number of measures has been taken to create a cohesive environment where women will be the chieftains of their development in all spheres. These includes STEM, that is science, technology, engineering and mathematics for women and girls, Tech Equity, a digital inclusion platform for digital and financial literacy and other technical and subjects. G20 Empower, that aims at accelerating women's leadership and empowerment in the private sector.
The G20 Empower Best Practices Playbook has been substantially sealed up under India's presidency. Over 300,000 citizens were engaged through Jan Bhagidari events to showcase women led development through women community leaders, artisans, and self help groups. On a concluding note, it can be said that this level of unwavering commitment is a reflection of the India's advocacy and support for gender parity and gender equity, which has been inspired by the vision of an Amrit Kal where Nari Shakti is celebrated in all spheres of the economy and society. Thank you. Dr. Anuja Bharti. Dr. Anuja Bharti. Next is Anjali Chandra. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Please 2 सेकंड आप लेकर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just sharing my PPT. A very good afternoon to everyone. I am Anjali Chandra, research scholar from Department of Economics, Patna University, Patna. The title of my paper is Presidency of India in G20 Summit, a golden opportunity to reduce unemployment. Let's start with the first slide. As the largest democracy of the world and the fastest growing economy, Presidency of India in the group of 19 countries and the European Union is praisable. India proved its global leadership role with accepting the presidency of G20 for the first time. 1st of December 2022 is a memorable day when India holds the presidency of G20 from Indonesia for a period of 1 year. Presidency of G20 is a symbol of the beginning of Amrit Kal, which is a period of 25 years started from 75th independence anniversary of the country. During presidency of the summit, India focused on many issues such as digital innovation, equitable global health access, climate resilience, inclusive growth, regulations on cryptocurrency, more loans to developing nations from multilateral institutions, food security, energy security, reduction of unemployment, trade, investment, tourism, etc. Unemployment is a major problem towards developing countries. Provide aid to most vulnerable countries and expansion of high quality employment opportunities are some of the objectives of G20 which contribute a lot to reduce unemployment. The present paper uses secondary data to analyze the presidency of India in G20 summit and also to examine the summit as an opportunity in the reduction of the level of unemployment. Some of the reviews are there. According to Varvantkar, in today's world, relationships with other countries are more important than domestic politics. According to Singh and Vermani, in order to maintain global stability, India's role in presidency of the summit will be crucial. This paper deals how the G20 presidency will shape the identity of India as global leader and rising power. Now let us know about what is G20. G20 is a group of world's 19 major economies and European Union. It comprises Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, United Kingdom, and the United States, along with the European Union. European Union is an economic and political union of 27 countries in Europe. G20 was established in the year of 1999 as a platform to discuss global economic and financial issues. After the Asian financial crisis, the organization emerged as a forum for the finance ministers and governors of central bank to discuss and handle the global challenges. Later on, this institution was upgraded to the level of heads of states in the wake of international financial and economic crisis in the year 2007. And in the year of 2009, nomenclature of this institution was done as Premier Forum for International Economic Cooperation.
Now, G20 Summit 2023, India's leadership role. The inaugural meeting of G20 took place on 15-16 December 1999 in Berlin, Germany. This meeting was chaired by Finance Minister of Canada and hosted by Finance Minister of Germany. Presidency of G20 Summit 2023 represents the leadership role of India. India received the opportunity for the first time as 18th G20 Summit. On 9-10 September 2023, Bharat Mandapam International Exhibition Convention Center, Pragati Maidan, New Delhi became the witness of 18th G20 Summit. Yes, ma'am. Just concluding, ma'am. Okay, ma'am. Now, the conclusion of this paper is Presidency of India in G20 Summit proves the efficiency of the nation. India focused on many issues where some important issues are economic and financial stability at global platform, food security, energy security, green hydrogen, sustainable development, reduce emissions, reduce unemployment, etc. are some of the priority areas during this prestigious presidency of G20 as an opportunity to address the challenges of global economy. These are some references. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Next is Priyesh Chaurasia. Saket Bihari. Yes, ma'am. Saket Bihari. Yes, ma'am. First of all, सभी जितने भी delegates हैं, yes, Saket Bihari, myself Saket Bihari from Darbhanga University में, yes. सबसे पहले इस G20 प्रेसिडेंसी के इस सभागम में उपस्थित सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। इतने अच्छे कॉन्फ्रेंस के लिए जिस तरह से कि इस तरह का आयोजन हुआ है और अभी तक मैंने जितने वक्ताओं को सुना है, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन समस्तीपुर हुई, मैं केआर यूनिवर्सिटी गुड़गांव से हूं और अभी मैं स्कूल ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं। मेरा जो विषय है जो मैंने चुना है कि इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी से 2 कॉरिडोर पॉजिटिवली साइन हुए हैं MOU और उसकी क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, समय की प्रतिबद्धता है, तो मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। मैं एक संक्षेप में बताना चाहूंगा कि जो कॉरिडोर है, इसकी जो MOU साइन हुई है, इसकी पृष्ठभूमि रही है चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव PRI, एक कॉरिडोर चाइना ने 2030 में बिल्ड किया था। उसी को लेकर के हेड ऑफ द स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपियन यूनियन ने एक साइन किया MOU के ऊपर इस G20 के सम्मेलन में और एक कॉरिडोर का नाम दिया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर काफी हद तक काफी अर्थों में मायने रखता है। इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं बताना चाहूंगा। इसके जो मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य हैं, बूस्ट ट्रेड, क्लीन एनर्जी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द नेशन। इस कॉरिडोर के जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें रेलवे लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक केबल होगा, हाई स्पीड डाटा केबल होगा, इंटरनेट और अदर फैसिलिटीज के लिए। कॉरिडोर सेगमेंट्स में नॉर्थ कॉरिडोर लिंक करेगा अरेबियन गल्फ से यूरोप तक और ईस्टर्न कॉरिडोर जो है ये करेगा इंडिया से अरेबियन गल्फ तक। जो बेनिफिट्स होगी भारतीय परिदृश्य में, उसमें जॉब इन्वॉल्वमेंट, ये बेनिफिट्स हैं, क्रॉस बॉर्डर शिप एंड रेल ट्रांजिट, ये बेनिफिट है, चाइना की BRI को कम्पीट करेगा, ये एक बेनिफिट ये है। ज्योग्राफिकल एडवांटेज होगी जिसमें कि भारत को बहुत हद तक इस लोकेशन के साथ में साउथ एशिया और गल्फ कंट्रीज में बिजनेस करने का मौका मिलेगा। लेकिन साथ ही हमें ये देखने की जरूरत होगी कि इसके बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं जो कॉरिडोर हम बनाने वाले हैं। इसमें स्टेक होल्डर्स डाइवर्स है, सबकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड सोशियो इकोनॉमिक से लेकर के डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नेशन है, बैकग्राउंड अलग अलग है इन कंट्रीज की। जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट आएगा, किसको कितना इसमें मिलेगा हिस्सेदारी, ये प्रॉब्लम आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी चैलेंजेस आने वाले हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैसे हुई इन देशों के बीच में, चाहे बिजनेस को लेकर के हो, मार्केट एक्सेस को लेकर के हो, इसके लिए भी चैलेंजेस आएंगे। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, हर देश की अलग अलग है। जैसे गवर्नमेंट बदलेगी, पूरा का पूरी पॉलिसी स्ट्रक्चर बदल जाएगा, वो चैलेंजेस आएगी। सिक्योरिटी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, इस एरिया को कौन कितनी हद तक सिक्योर करता है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात भी होगी, कैसे बैलेंस करेंगे। फाइनेंशियल भी आएंगे। ओके मैम,
जस्ट आई वांट टू कंक्लूड दैट ये कॉरिडोर भविष्य में एक उद्गम दिशा की ओर बढ़ते हुए कॉरिडोर के रूप में उभरेगा और कोई इसमें शक नहीं कि भारत इसमें एक अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा। एक बार मैं फिर से सभी को साधुवाद देता हूँ इतने अच्छे कॉन्फ्रेंस के लिए। धन्यवाद। संजय कुमार, आप मेरी बात सुन रहे हैं? आवाज आ रही है आपको मेरी? Yes, madam. Yes, madam. कुमारी Yeah, yes, madam. ओके ओके सर, आप प्लीज 2 से 3 मिनट में आप अपनी बात को रखें। हाँ संजय कुमार ना? Am I audible, madam? यस यस यस। My name is Sanjay Kumar Bhavra. I am research scholar in School of Management Studies, IGNOU, in Delhi. So this is basically paper related to literature review, factors affecting customer satisfaction in quality assurance. So customer is the recipient of a product, whether it can be external or internal customer. He wants the satisfaction, either the service or as a product. So it is a diversified approach. In this literature review, we have covered consumer product, commodity items, services, strategic field, specific purpose use. So there are various range of products, and for each products, there are different levels of the satisfaction. So this paper actually we scrutinized, we reviewed so many papers. पीपीटी हो रहा है सर? Hello. हाँ, पीपीटी शो Yeah. नहीं हो रहा है आपका सर? We concluded the hypothesis. So this is first is a force phenomena, a business model. We have to see the business, what is the business model and where that customer satisfaction is fitting. Revenue generation. Actually, one of the most important thing is sometimes we feel that the technology advancement and the product customization is for the customer, but sometimes it is a need of the revenue generation for the business unit. Efficient production, technology, innovations, multi-purpose use, value addition, and customer satisfaction. These are the points we have gone through and we searched for. Literature view that there are so many literatures, they are defining the customer satisfaction in a different ways. First is the customer needs. The customer needs should be satisfied. Customer focus. Customer should be focused. Manufacturing process should be good. If it is good, then only the good product will come out. And product life cycle, it is not only that the product is sold and after that there is no service level. So we have to see till the obsolescence of the item, from a introduction to the obsolescence or a technology replacement, the vendor or supplier should take responsibility. Service is also important. That is tailor factory made. Complexity in a production, the quality assurance is a prime factor. So that also is a part of a customer satisfaction. One seaport study says responsiveness and the reliability also vital factor for the customer satisfaction. One paper says that behavior, intention, and emotion bond. TQM, quality, cost, delivery, flexibility. These are the things that papers are talking about. And this servo call also tangibility. This is very popular. Actually, we are aware about this service quality parameters. So this also papers Uma Maheshwari 2019. That paper is specifically talking about those factors. Further, the efficiency, reliability, responsibility, assurance, security, privacy. These are the things that those can affect the customer satisfaction. Hypothesis based on various papers. So I made some hypothesis. Compliance to the customer needs affect customer satisfaction. Certification to the standards. This is much more vital. Innovation effect. Access to the service. Turnaround time. Resolution to the customer issues. Life cycle support effect. Thank you. Thank you, sir. Next participant is Kumari Aarti Singh. Kumari Aarti Singh. Next is Ritu Verma. Ritu Verma, क्या आप मेरी बात सुन रही हैं? Sanja Vats. Next is Sanja Vats.
कैलाश चंद्र कैलाश चंद्र दास Ma'am Shaljawat. Yes, ma'am. Kailash Das. Hello. Ma'am Shaljawat. Yeah. Good afternoon to one and all present here. My topic of presentation is G20 Key Achievements, India's Presidency. Uh, the 18th session of G20 has been concluded successfully, and India has done every bit of it to make it a historic event for the entire world. This was indeed a great opportunity for India to advertise its vision to the world. It can be said that it was the perfect time for India to showcase its vision to the entire world. The world is witnessing Russia-Ukraine war and also currently recovering from pandemic era. In this chaotic time, India has unquestionably had the opportunity to promote peace and harmony, which India did it with all her effort. The theme which served for India's chairmanship for G20 is One Earth, One Family and One Future, which advocates for inclusive and resilient growth, progress on SDG, that is Sustainable Development Goals, green development, technological transformations, and public digital infrastructure. Also, reforming a multilateral institution, women-led developments. India has conveyed the message to the world that a time of war has gone, and now is the time for collaboration and coexistence. India has scaled in terms of its global position and prestige. With a world filled with conflict, chaos, and crisis, India's G20 presidency has come out as an emblem of healing, harmony, and hope. In a broader sense, the ancient Indian ethos have turned out to be a legacy of India's G20 presidency, and if it is literally practiced in its true spirit, it could definitely ignite inclusive multilateralism, which can create peaceful environment for entire world. Thank you so much. Thank you, ma'am. Next, Kailash Chandra. Yes, I'm audible, ma'am. I'm Yes. audible. Yes. Kailash Chandra. Yes, ma'am. Okay, ma'am. I'm starting with my PPT presentation. Okay, myself, Kailash Chandra Das. I'm from Odisha, Sambalpur University. My topic is Mission Shakti as a platform of women-led development, a story of Odisha. Before going to that topic, this is my presentation flow. An introduction is that women are, that women are known as the power Shakti of Indian mythology. In present view, that is, women have achieved success in business and establishment. That is the role model of the Indian sector, just like males. And the definition of women entrepreneur is women or group of women who start, organize, and manage a business. Women are the participants in capital, and employment in business has been used by the Indian government to identify women entrepreneurs. So, how the women-led development using Mission Shakti as a platform? This is the platform that is started in the year of 2001 under the Ministry of that is Mission Shakti. This is the current status of women-led startups in Odisha. That is mainly 10% are Indian firms and 20% to 23% are SME owners. Uh, that is my justification of research. First of all, gender equality and women rights. Second, women pioneering development as a role models. Third one, that is my objective of the study. To study the factor motivating women to join as Mission Shakti, to identifying the challenge faced by female entrepreneurs as a part of Mission Shakti, to determine the cause of markets changing environment and the degree to which that is impact to women. These are my literature review. This is conceptual framework, that is factor motivating women to start social entrepreneurs. That is, one is push factor, another is pull factor. These are my
literature reviews, and lack of, that is the my conceptual framework. Challenge faced by women entrepreneurs, that is lack of female advisor, that is family ties, fear of achievement, not being taken seriously, financial issues. These are the main challenges faced by the women entrepreneurs. And this is my methodology. The methodology is, that is secondary and primary data. Total 7 Mission Shakti groups are collected, and that is almost 200 respondents. Result and discussion, that is reason behind to join the Mission Shakti. That is first one is, yes, madam. I'm concluding with 1 minute. Yes, ma'am. I'm concluding, ma'am. That is income generation, taking out of loan, and this is my conclusion. Okay, ma'am. Thank you. Okay, thank you. Next is Dr. Sujit Kumar. Dr. Sujit Kumar, are you there? Sujit Kumar, next. Sujit Kumar. Rahul Garg. हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम, राहुल गर्ग। मैडम, क्या मैं प्रेजेंट कर राहुल गर्ग? हेलो हेलो हेलो। हाँ, हेलो। एम आई ऑडिबल? हाँ जी। एम आई ऑडिबल मैम? जी, ठीक है। माई से हेलो हेलो माई सेल्फ, हाँ जी, माई सेल्फ राहुल गर्ग। गुड आफ्टरनून एवरीवन, and my topic for presentation is role of foreign direct investment in women's employment in India, an overview. What is FDI? Foreign direct investment is a type of investment in which a company or individual from one country invest in a company or assets in another country. Foreign investment can take many forms, including the purchase of share, bonds, or other securities, the establishment of a new business, or the acquisition of existing business. Objective of the study: the objectives of this study are to assess the overall impact of FDI on women's employment in India, to examine the quality of jobs created for women through FDI, to identify the sector-specific impact of FDI on women's employment, to explore the role of FDI in promoting gender equality in the workplace, to investigate the social and cultural implications of FDI on women's employment, to identify policy implications and recommendations. Now I want to conclude my topic due to time restrictions. The impact of foreign direct investment on women's employment in developing countries like India has been a topic of debate and discussion among policymakers and researchers. On the one hand, FDI can bring in capital, technology, and expertise, which can create more job opportunities, especially for women who are often marginalized in the labor market. On the other hand, FDI can also lead to increased competition, lower wages, and poor working conditions, which may negatively affect women's employment outcomes. Moreover, the impact of FDI on women's employment also depend on the specific policies and regulations in place to ensure labor standards and gender equality. Without adequate safeguards and regulations, FDI can exacerbate gender inequality and exploitation, particularly in sectors such as manufacturing and services. Thank you very much. Thank you, Doctor. Priya Thank you, Kumari. ma'am. Next is Priya Kumari. Priya Kumari. Kumar Ranjan. Next is Kumar Ranjan. Kumar Ranjan. Neha Rani. Neha Rani. Upendra Thakur. Upendra Thakur. Mangal Murthy. Next is Mangal Yes, ma'am. Murthy. Yes, ma'am. Am I audible? Yes.
आप अपनी Am I आवाज को कम करें, फैन चल रही है, फैन बंद करेंगे क्या? आवाज नहीं आ रही है। ma'am, am I audible? Yes, ma'am. अपने फैन को बंद करें, पीछे से आवाज आपकी आ रही है, फैन की आवाज, फैन बंद करें। Fan. Now it is audible, ma'am. Ma'am, am I audible? Yes. Should I continue? Good afternoon, everyone. Thank you for providing me this opportunity. My topic is agriculture and food security in India. Before mid 1960s, India relied on imports and food aid to meet domestic requirements. However, since its independence, India has made immense progress towards food security. It adopted significant policy reforms focused on the goal of food grain self-sufficiency. The Green Revolution began with the decision to adopt superior yielding, disease-resistant wheat varieties in combination with better farming knowledge to improve productivity. Punjab became country's breadbasket after Green Revolution, while India has shown a steady average nationwide annual increase in the mass produced per hectare for some agriculture items over the last 60 years. During the last few decades, the total food production in India has increased at a much faster pace than the population. The Green Revolution started in late 1967-68 was a noteworthy watershed resulting in phenomenal increase in the production of agricultural crops, especially in food grains that had changed the food security situation in India. Wheat crops among the food grains drew maximum benefit from the Green Revolution. India is currently the world's second largest producer of many dry fruits, agriculture based textiles, raw materials, roots and tuber crops, pulses, sugarcane, coconut, farm fish, and vegetables. In 2010, India is also top 5 world's largest producer of cash crops like coffee and cotton. Same is the case with livestock and poultry meat. In 1970s, food security was understood as the availability of all types of adequate supply of basic foodstuff. United Nations 1975. Amartya Sen added a new dimension of food security and emphasized the access to food through what he called entitlements, a combination of what one can produce, exchange in the market along with state or other socially provided supplies. In 1995, the World Food Summit declared food at the individual, household, regional, national, and global levels exists when all people at all times have physical and economic access to the sufficient, safe, and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Today, world has more than enough food to feed everyone, yet 850 million are food insecure. Achieving food security requires adequate food availability, access, and use. Agriculture plays a key role in providing food availability globally, an important source of income to purchase food and the last food with high nutritious status. The chronically food insecure never has enough to eat. Investments in agriculture are important to increase food security. Rising productivity increases rural incomes and lowers food prices, making food more accessible to poor. Productivity gain are key to food security. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. हमारा समय जी जी थैंक यू सो मच। हमारा Thank you. समय अब खत्म हो रहा है आज के सेशन का। बोलिएगा, आइए जल्दी आइए। तो एक रह गई है हमारी प्रेजेंटेशन के लिए, अनु कुमारी स्नेहा। 2 मिनट मैम प्लीज। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षाविदों का अभिनंदन करती हूँ। मैं अनु कुमारी स्नेहा दलित न्याय मिथिला विश्वविद्यालय से हूँ। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य लैंगिक असमानता को खत्म करना और महिला नेतृत्व, सम्मान व समानता एवं महिला सुरक्षा, कानून और अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भारत के G20 एजेंडे में है।
G20 का मूल उद्देश्य लिंग समानता को प्राप्त करना है। G20 के शिखर सम्मेलन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री का कथन था, महिलाओं की भागीदारी के बिना वैश्विक विकास संभव नहीं है। इस बात की पारंपरिकता के संदर्भ में कई उदाहरण है। इंटरनेट और मोबाइल की बदलती पहुंच के साथ साथ भारत में महिला उद्यमिता की काफी वृद्धि हुई है। मैक्सिक्रेस के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी जीडीपी में 18% की बढ़ोतरी कर सकता है, परंतु उसमें महिलाओं की भागीदारी भी पुरुषों के बराबर होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2022 में महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी 47% थी, जबकि पुरुषों का 72% था। इंटर पार्लियामेंट यूनियन के अनुसार जनवरी 2023 के आंकड़ों को देखें तो इस असंतुलन के कारण वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की संख्या केवल 25.5% थी। राजनीति में लैंगिक समानता तक पहुंचने के लिए हमें अभी बहुत सारे मोर्चे जीतने हैं, अभी हमें कई सालें लगेंगी। अतः महिलाओं की शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शिक्षा से ही महिलाओं में सक्रिय भागीदारी, नेतृत्व क्षमता और निर्णय क्षमता का विकास होगा। परिवार में सभी सदस्य यह स्वीकार करें कि महिला और पुरुष को एक समान आगे बढ़ने का अधिकार है। महिलाओं को ऐसे वातावरण में रहने का पूर्ण अधिकार है जिसमें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की शिकार न हो। जब वह सुरक्षित रहेंगी तभी वह सभी क्षेत्रों में 100% कुशल योगदान दे पाएंगी। अतः जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार हो। महिलाओं के हित के लिए बनाई गई सभी सरकारी योजनाओं को सफल बनाएं। अगर महिलाओं के अंदर सुरक्षा और समानता की भावना आती है तो वे किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करके समाज को एक नई दिशा दे सकती है। इससे देश का सर्वश्रेष्ठ विकास होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सॉरी आइए, ये लोग यहाँ बैठ करके बचाए मैं अपना प्रेजेंटेशन ठीक लगाइए। कुमार रंजन बस फाइंडिंग्स बताइए। रिसर्च स्कॉलर है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। Respected teachers, students, research scholar. My research theme is role of financial inclusion in women empowerment. Financial inclusion means easy access of financial services such as banking facilities, credit facilities, digital facilities for especially women and vulnerable societies. Maximum women of Indian society of rural areas are illiterate and underdeveloped. Due to lack of financial awareness, they will continue to lag behind. But nowadays, now era is the era of women empowerment. So for empowered women, the role of financial inclusion becomes very important. In this article, I will prove how financial inclusion plays a vital role in women empowerment. Also, we write view various schemes such as Jivika, Pradhan Mudra Yojana, Jan Dhan Yojana, it is given by government for financial inclusion for women. Pradhan Mudra Yojana provides easy loans to women to start their own ideas based scheme provide collection-free loans at very low interest rate. Kishore loan, Tarun loan, and Sisu loans are provided under these schemes, whereas Jivka provides employment and self-employment to local level, especially for women. They also provide self-finance or credit to self-help groups to women. So this paper, an attempt will be made to show to what extent the various schemes have provided effective for women empowerment. We know that in 2010 at Seoul G20 summit, the global partnerships for financial inclusion was created by G20 countries. Hence, it is clear that G20 countries are very serious about financial inclusion, especially for backward society, the person who is, especially women. We also try to focus in this article to what steps have been taken in New Delhi G20 summit held in September 2023 for financial inclusion, especially for women.
Thank you so much. Vote of thanks mostly to your participants. थैंक यू सो मच कुमार रंजन जी। वोट ऑफ थैंक यू कोई नहीं बोल सकता है क्योंकि उसमें ब्लॉक है सब। आज हमारे ये सेशन टेक्निकल सेशन समाप्ति की ओर है, समाप्त हो चुका है। अब हम अपने सभी प्रतिभागियों को, अपने यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को, शिक्षकों को, छात्रों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और खास करके मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन हमारे कुलपति महोदय को करती हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम की स्वीकृति दी। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल सर जो आज हमारे साथ किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं रहे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद हमारे साथी शिक्षकगण जो हमारे साथ लगे रहे, बीएड विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर बसंत कुमार सर जिन्होंने एंकरिंग की, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। छात्र भी हमारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के बहुत देर से एनएसएस के साथ लगे हुए हैं हमारे साथ, सुबह से ही हमारे गेस्ट फैकल्टीज हैं, बीएड के छात्र हमारे जो स्वागत गान और सरस्वती वंदना में शामिल हुए, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ हमारे कॉलेज के नॉन टीचिंग स्टाफ का, जिनके सहयोग के बिना हमारा ये सेमिनार का आयोजन संभव नहीं है। और अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापन दूंगी हमारे मीडिया प्रभारी दीन बंधु जी को, जो लगभग पिछले एक हफ्ते से लगे हुए हैं और कई तरह की तैयारियां होती हैं सेमिनार के आयोजन में, तो काफी सहयोग कर रहे हैं हमारा। मैं अपने प्रतिभागियों का फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं बसंत सर से आग्रह करूंगी आगे की कार्रवाई। धन्यवाद मैडम, आपके धन्यवाद ज्ञापन के लिए। बीएड के स्टूडेंट्स आ जाएंगे राष्ट्रगान के लिए, आ जाइए। राष्ट्रगान के बाद में कार्यक्रम समाप्त। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। नहीं याद होगा तो मैं कागज पे लिख रहा जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन बच्चों का भी विशेष आग्रहपूर्ण धन्यवाद। बहुत सहयोग किया है बीएड के विद्यार्थियों ने। धन्यवाद सभी को। जी इसको बंद कर दीजिए।